रहीम 35वां कराची जिमखाना रमज़ान क्रिकेट उमर एसोसिएट फेस्टिवल 2022 का ये मैच खेला जा रहा है। आज का मैच नंबर 9 है जो कराची जिमखाना वाइट और फैक्टडेट के बीच खेला जा रहा है। आज कराची जिमखाना वाइट पहली दफ़ा इस टूर्नामेंट में एक्शन में नज़र आएंगे कराची जिमखाना वाइट के खिलाड़ी। और यहाँ फैक्टडेट इंजीनियरिंग ने टॉस जीता है और पहले बारी का फैसला किया है। सलामी रूप के बल्लेबाज में फ़ाहद अंजुम और अहमद हुसैन हैं बल्लेबाजी के लिए तैयार, जो कि सलामी रूप में आए हैं। फ़ाहद अंजुम, अहमद हुसैन सामना करेंगे वहाँ फार एंड की ओर से। अब्दुर्रहमान है गेंदबाजी के लिए तैयार। जिमखाना के कप्तान उमैर शेख हैं जो विकेट कीपिंग के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अपने आज के मैच को सरप्राइज़ कर रहे हैं एम्पायर वसीमुद्दीन और एम्पायर रशीद ख़ान। और हमारे साथ और इस बीच पहली गेंद वाइट का इशारा लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए, और शुरुआती 4 रन से की है वाइट की गेंद बॉल से। इसी तरीके से 5 रन पहली गेंद पर। हमारे साथ जो ऑफिशियल स्कोरर हैं पीसीबी के राशिद असलम हमेशा की तरह चौकन्ने रहते हैं, और स्पोर्ट्स टीम की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, जो कि लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं इस मैच को, इस टूर्नामेंट को बल्कि पूरे। अगली गेंद ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया उससे खूबसूरती के साथ मोहम्मद हुसैन ने। सीधा फील्डर के हाथ में, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। अहमद हुसैन और फ़ाहद अंजुम ने इनिंग का आगाज़ किया है, जबकि वहाँ फार एंड की ओर से अब्दुर्रहमान दाहिने हाथ के मध्यम तेज़ गेंदबाज, उनके लिए फील्डिंग की सजावट 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 5 ऑन साइड पे। और इस बार गेंद मिडिल स्टंप पे पड़ी, इस गेंद को टर्न किया है ऑन साइड पे। एम्पायर का इशारा देखना होगा। गेंद बल्ले से लगी थी और इस तरीके से 1 रन, लेकिन वहाँ एक उम्मीद सी ज़रूर पैदा हुई थी गेंदबाज के लिए। अब्दुर्रहमान फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। चार खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 5 ऑन साइड पे। इस बार ऑफ स्टंप पे पड़ी इस गेंद को खेला है पॉइंट की जानिब। रन लेने का कोई मौका नहीं है बल्लेबाजों के लिए, और एक डॉट बॉल वहाँ अब्दुर्रहमान की जानिब से। अब्दुर्रहमान शुरुआत से ही अपनी लाइन और लेंथ को अभी ढूंढ रहे हैं, कहना पड़ेगा। अब्दुर्रहमान हमारी तरफ आते हुए दाहिने हाथ से, और इस बार अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद थी, उसको अगले कदम पे ड्राइव किया है ऑफ साइड पे, तब तक कि मिड ऑफ फील्डर आके फीड करे। अब्दुर्रहमान फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ओवर पिच गेंद थी। इस बार फिर से एक उम्मीद और एक आस के साथ एम्पायर से इल्तिजा ज़रूर की थी, लेकिन गेंद लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ आ रही थी। एम्पायर रशीद का इशारा वाइड बॉल का, लेग बाई। शुक्रिया राशिद। और इस लेग बाई के साथ पहले ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। पहले ओवर के इख्तिताम पर 7 रन। फैक्टडेट
इंजीनियरिंग टॉस जीतकर पहले बारी लेते हुए 7 रन बगैर कोई विकेट खोए और यहाँ फरीद कासी हैं यहाँ कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालने आए हैं। फरीद कासी के लिए फील्डिंग की सजावट, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। ऑफ साइड पे थर्ड मैन लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए और मिड ऑफ यहाँ सर्किल के करीब हैं, हालांकि एक स्लिप के साथ गेंद करेंगे फरीद कैसी। अब डीप लॉन्ग लेग पर फील्डर को भेज दिया गया है लगभग बाउंड्री लाइन के करीब। 3 खिलाड़ी ऑन साइड पे, एक स्लिप के साथ 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे। फरीद कैसी दाहिने हाथ से ओवर द विकेट हमसे दूर जाते हुए गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज को। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पुल करना चाहते थे, इतनी भी शॉर्ट नहीं है कि आसानी के साथ पुल कर सके, लेकिन फिर भी ऑन साइड पे खेलने में कामयाब ज़रूर हुए। वहाँ फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। फरीद कैसी फरीद कैसी अब गेंद करेंगे फहद अंजुम को, जो कि कप्तान हैं फैक्टडेट के। फरीद दाहिने हाथ की मध्यम तेज गेंदबाज, इस बार ओवर पिच गेंद पे ड्राइव किया है उसे खूबसूरती के साथ। फहद अंजुम ने, कहना पड़ेगा, जो ही गेंद को थोड़ा सा ओवर पिच गिरते देखा, अपने कदमों का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया, फ्रंट फुट पे आए और दिखाया बल्ले का वो गूदा जो बीच में होता है डीप मिड ऑफ बाउंड्री के ऊपर से 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट यहाँ फहद अंजुम का, और इन 4 रनों के साथ 11 रन। फरीद कासी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, और अब ऑन साइड पे एक खिलाड़ी को बढ़ा दिया गया है। इसी तरीके से 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 5 ऑफ साइड पे। स्लिप को रिमूव कर दिया गया है। इस शॉट के बाद देखना पड़ेगा कौन सी लाइन पर गेंद करते हैं फरीद कैसी। हमसे दूर जाते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाते हुए इस गेंद को छेड़ना चाहते थे, गेंद से चूक के गेंद गई विकेट कीपर के पास। वहां एम्पायर वसीमुद्दीन का इशारा, वाइड बॉल। पैंतीसवां कराची जिमखाना रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट जो उमर एसोसिएट के ताउन से खेला जा रहा है। 2022 का ये मैच है, मैच नंबर 9 है ये इस टूर्नामेंट का, जो कि कराची जिमखाना और फैक्टडेट इंजीनियरिंग के बीच खेला जा रहा है। फैक्टडेट इंजीनियरिंग टॉस जीते के पहले बारी ले रहे हैं और 12 रन बनाए हैं। तीसरे ओवर का खेल हो रहा है, दूसरे ओवर का खेल हो रहा है, और इस बार शफल करते हुए खेल दिया है उसे। उड़ता हुआ शॉट डीप मिड ऑन के फील्डर के लिए, कोई मौका नहीं, एम्पायर वसीम का इशारा, 4 रन। जो ही इस गेंद को थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे ओवर पिच गिरते देखा, बैकफुट पर जाते हुए बल्ले के बीचों बीच लिया उसे डीप मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर से। फहद अंजुम ने अच्छी बारी ले रहे हैं। फहद अंजुम अब तक 2 चौके लगा चुके हैं, अपने 8 रन में 6 गेंदों का सामना किया है फहद अंजुम ने। फरीद कैसी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। ऑफ साइड पे अब डीप कवर लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, डीप थर्ड मैन भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए। फरीद कैसे की अगली गेंद और पिच गेंद थी, फुल टॉस बनाते हुए टर्न किया है, वहाँ देखना पड़ेगा फील्डर ने चूक हुई, फील्डर से मिस फील्ड की, उसका नतीजा 4 रन की सूरत में यहाँ एम्पायर वसीमुद्दीन का इशारा।
फहाद अंजुम ने ये तीसरा चौका लगा है और पूरे कप्तान के रूप में नज़र आ रहे हैं यहाँ जिम्मेदारियों के साथ। अब तक दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका लगाया है। 3 चौके लगा चुके हैं फहाद। फरीद कैसी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। दाहिने हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज गेंद करेंगे फहाद अंजुम को और इस बारी गेंद ऑफ स्विंग, गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टपक खाने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी। गेंद की स्विंग को पहचानते हुए अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, खेला है उसे डीप कवर की जानिब। वहाँ फील्डर मौजूद, रन भी मौजूद वहाँ दोनों बल्लेबाजों के लिए और 1 रन के साथ फहाद अंजुम पहुंचे 13 रन पर। 21 रन फैक्टडेट इंजीनियरिंग टॉस जीत के पहले बारी लेते हुए बगैर कोई विकेट खोए। फरीद कैसी अब तक तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। अब तक 14 रन दे चुके हैं हमसे दूर जाते हुए। इस बार ये गेंद आउट स्विंगर गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टपा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को छेड़ना चाहते थे। गेंद उनकी रेंज से बाहर थी, विकेट कीपर के पास गई जहां एम्पायर वसीमुद्दीन का इशारा वाइट बॉल का और एक और रन यहाँ वाइट बॉल के रूप में फैक्टडेट की झोली में। 22 रन फैक्टडेट टॉस जीतकर पहले बारी लेते हुए 20-20 के इस मैच में। यहाँ कराची जिमखाना के ग्रीन कारपेट पर खेला जाने वाला ये मैच और इस बार ऑफ स्टंप पे पड़ी इस गेंद को अगले कदम पे खेलना चाहते थे। गेंद पूरी कमान के साथ नहीं आई लेकिन फिर भी लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथ में गई। रन लेने का कोई मौका नहीं था बल्लेबाजों के लिए। इसी के साथ दूसरे ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर 22 रन बगैर कोई विकेट कोई फैक्टडेट इंजीनियरिंग टॉस जीतकर पहले बारी लेते हुए यहाँ 35वां कराची जिमखाना उमर एसोसिएट रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल 2022 का ये मैच नंबर 9 है जो खेला जा रहा है। कराची जिमखाना वाइट जो कि पहली बार इस टूर्नामेंट में एक्शन में नज़र आ रहे हैं। और वहाँ गेंदबाजी की जिम्मेदारियां फिर से 22 और इस बार ड्राइव किया है मोहम्मद हुसैन ने। फहाद अंजुम थे ये बल्लेबाज। आगे की इस गेंद को डीप मिड ऑन बाउंड्री की तरफ। क्या कह रहे हैं यहाँ एम्पायर ने रेफर किया है स्कोर बोर्ड के लिए। और ये गेंद बिल्कुल कहना पड़ेगा बीमर थी, वाइट का इशारा किया है एम्पायर ने और इसी के साथ वाइट के एक नो बॉल का इशारा किया और बाई के 4 रन भी। विकेट कीपर भी पूरी तरीके से चूके नो बॉल दिए। एम्पायर ने चेस्ट हाई अब्दुल रहमान जो कि लाइन से भटके हुए हैं इस ओवर में, इस बार फिर से लाइन से भटके लेकिन इस बार करीब करीब मामला था वाइट का लेकिन एम्पायर अपनी जगह अनमूव रहे। अब्दुल रहमान दाहिने हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज। फील्डिंग की सजावट अब्दुल रहमान के लिए 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे 4 ऑन साइड पे हमारी तरफ आते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंद करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज को इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेले हैं फुल टॉस बनाते हुए ऑन साइड पे। तब तक कि डीप स्क्वायर लेग से फील्डर फील्ड कर रहे हैं। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। फहाद अंजुम खेल रहे हैं 18 रन पर 12 गेंदों का सामना किया है 4 चौकों की मदद से, जबकि उनके साथ अहमद हुसैन है जो
जिन्होंने 1 रन बनाया है, 4 गेंदों का सामना किया है और अब तक की साझेदारी 32 रन की हो चुकी है। 32 रन में 18 रन फहाद अंजुम के हैं और इस बार ऑफ स्टंप पे पड़ी इस गेंद को कदमों का इस्तेमाल करते हुए अगले कदम पे खेले हैं, डीप मिड ऑफ बाउंड्री के ऊपर से। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। यूं ही गेंद को थोड़ा सा ओवर पिच गिरते देखा, क्रीज से बाहर आए, अगले कदम का इस्तेमाल किया, बल्ले के बीचों बीच लिया गेंद को और कवर और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बीचों बीच 4 रनों के लिए दिखा दिया रास्ता वहां। अहमद हुसैन थे ये बल्लेबाज और इस बार फिर से ओवर पिच गेंद को ड्राइव किया है। इस बार दम नहीं था बल्ले में, गेंद गई सीधी ऑन साइड पे खड़े फील्डर के पास। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। अब्दुल रहमान गेंद करेंगे, अहमद हुसैन को इस बार आगे की रेस गेंद को ड्राइव किया है डीप मिड ऑन की जानिब, तब तक फील्डर फील्ड करें। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया और इसी के साथ तीसरे ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर 37 रन 37। विकेट कीपर ने अब हेलमेट मंगाया है, देखना पड़ेगा। विकेट कीपर कप्तान जो कि हेलमेट पहन कर विकेट कीपिंग करेंगे। जोर से बोलो। यहाँ गेंदबाजी में तब्दीली हुई है, गालिबन फरहान आरिफ आए हैं। दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज फरहान आरिफ की जिम्मेदारियां फरहान आरिफ कमेंट्री बॉक्स की ओर से। दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज, फील्डिंग की सजावट में 6 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। 35वां कराची जिमखाना उमर एसोसिएट रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल 2022 का ये मैच खेला जा रहा है। ये मैच नंबर 9 है। फरहान आरिफ तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे अहमद हुसैन को। अहमद हुसैन जो कि सलामी रूप में आए हैं फहाद अंजुम के साथ, अब तक 6 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। 7 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका लगाया है अहमद हुसैन ने। सामना करेंगे फरहान आरिफ का। इस बार फरहान आरिफ की गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, अगले कदम पे आए खूबसूरती के साथ, देखना पड़ेगा। एम्पायर वसीमुद्दीन का इशारा, 6 रन। यूं ही गेंद को थोड़ा सा फ्लाइटेड गिरते देखा, अपने अगले कदम का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया, गेंद के पिच तक पहुंचे, खेल दिया उसे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। भरपूर क़ुव्वत वाला और एतमाद वाला शॉट कहना पड़ेगा। पहले ही गेंद का इस्तकबाल किया है फरहान आरिफ की 6 रनों के साथ वहाँ अहमद हुसैन ने। विकेट कीपर कप्तान आए हैं, कुछ हिदायत दी है फरहान आरिफ को। अगली गेंद फरहान आरिफ की दाहिने हाथ से, इस बार पहले की निस्बत अच्छी गेंद थी, टर्न किया उसे शफल करते हुए ऑन साइड पे, तब तक बैकवर्ड शॉर्ट लेग से स्क्वायर लेग पे जाके फील्डर फील्ड करते हैं। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। मौजूदा रन औसत 13.20 चल रहा है। शुरुआत से ही कहना पड़ेगा, ख़ास करके फहाद अंजुम जो कि 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब उनका साथ दे रहे हैं अहमद हुसैन। उन्होंने भी 144 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है और इस बीच ऑन पे खेलते हुए 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तब तक के डीप मिड विकेट के फील्डर फील्ड करते हैं। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का और 1 रन के साथ 45 रन 45।
फरहान की अगली गेंद तब्दीली के तौर पे थोड़ी धीमी और नीची रही। इस गेंद को पहचानते हुए थोड़ा सा इनसाइड आउट हुए, खेला उसे कवर की जानिब। तब तक के फील्डर आके फील्ड करते हैं। मौका था बल्लेबाजों के लिए, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। फरहान की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पुल कर दिया है उसे अगले कदम पर खूबसूरती के साथ। एम्पायर वसीम का इशारा, 4 रन। फरहान हारिफ फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार ऑफ स्टंप पे पड़ी इस गेंद को स्वीप करते हुए खेले हैं। कमान के साथ ना खेल पाए, फिर भी 1 रन लेने में ज़रूर स्क्वायर लेग के जाने कामयाब हुए हैं। चौथे ओवर के अख्ताम पर 51 रन फहद अंजुम पहुंचे। 24 रन पर 15 गेंदों का सामना किया, 5 चौके लगाए हैं फहद अंजुम ने। 160 का स्ट्राइक रेट है फहद अंजुम का, जबकि अहमद हुसैन 14 रन बनाए हैं। 10 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का लगाया है अहमद हुसैन ने। 140 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं और दोनों ही सलामी रूप के बल्लेबाज अब तक 51 रन की साझेदारी कर चुके हैं। 25 गेंदों का सामना किया है, 51 रन 12.75 के औसत से खेला है। यहाँ फैक्टडेट इंजीनियरिंग के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही अच्छी बारी ले रहे हैं, दोनों ही बल्लेबाज। वहाँ फार एंड की ओर से गेंदबाजी जारी रखेंगे अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान अपनी फील्डिंग की सजावट सजाते हुए 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 5 ऑफ साइड पे। कप्तान विकेट कीपर फील्डिंग को सजाते हुए और अब्दुल रहमान तैयार। इस बार ओवर पिच गेंद को खूबसूरती से खेला है, लेकिन वहाँ बहुत ही बदकिस्मती रही। शाह शाहजानी थे ये कैचर, जिन्होंने कैच होल्ड तो करीब करीब कर लिया था, लेकिन आखिरी लम्हे में गेंद उनके हाथ से स्लिप हुई और ये एक ज़िंदगी दी है यहाँ फहद अंजुम जैसे बल्लेबाज को। और ये बड़े ख़तरनाक साबित हो जाएंगे फहद अंजुम, जिस तरीके की यहाँ ज़िंदगी दी है शाहजानी ने। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था कहना चाहिए। और इस बार फिर से खेले हैं, फिर से इस बार गेंद से दूर थे शाहजानी, तब तक गेंद पे पहुंचते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फहद अंजुम जो कि अभी अभी एक ज़िंदगी हासिल कर चुके हैं, उस ज़िंदगी के बाद फिर से उन्होंने एक जारहाना शॉट खेला 4 रनों के लिए। ये ख़तरा की अलामत है। और इस बार फहद हंजानी है जिन्होंने यह भी कैच ड्रॉप किया है पॉइंट की पोजीशन पे। ताहा जंदानी है। अहमद हुसैन को भी ये ज़िंदगी मिली है, तो 2 बॉलों पे 2 ज़िंदगी दी है यहाँ कराची जिमखाना वाइट के फील्डरों ने। अब्दुल रहमान फिर से तैयार। इस बार अच्छी गेंद, इन स्विंगर गेंद खेलना चाहते थे, वहाँ विकेट कीपर भी पूरी तरीके से चूके। गेंद एम्पायर का इशारा देखना होगा, बाई के रूप में 4 रनों के लिए। अच्छी गेंद थी ये अब्दुल रहमान की, इन स्विंगर गेंद थी, बैकफुटर हो गए थे बल्लेबाज, चूके पूरी तरीके से, वहाँ विकेट कीपर भी चूके पूरी तरीके से। गेंद गई बाई के रूप में 4 रनों के लिए। तो कुछ हड़बड़ाहट नज़र आ रही है कराची जिमखाना वाइट के फील्डरों में। 2 कैच भी छोड़ चुके हैं,
दोनों ही बल्लेबाजों को एक एक ज़िंदगी दी है कराची जिमखाना के फील्डरों ने, और फील्ड में भी थोड़ी सी लैक्सिस कर रहे हैं और इस बार शॉर्ट पिच गेंद को पुल के अंदाज में खेले हैं डीप मिड ऑन की जानिब। तब तक के फील्डर फील्ड कर रहे हैं, मौका था बल्लेबाजों के लिए। एक रन का एक रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब्दुर्रहमान तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, फार एंड की ओर से 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 5 ऑफ साइड पे। ऑन साइड पे डीप मिड ऑन लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, डीप लॉन्ग ऑन भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए। अब्दुर्रहमान की गेंद थोड़ी नीचे रही, उसको कट किया है खूबसूरती के साथ, लेकिन वहाँ कमाल की फील्डिंग कहना पड़ेगा। समीर अहमद थे ये फील्डर जिन्होंने चौका बचाया है अपने फील्डरों के लिए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग थी। इसी के साथ 5वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 5वें ओवर के इख्तिताम पर 62 रन, 62। इस तरीके की फील्डिंग करना पड़ेगी कराची जिमखाना के फील्डरों को, जिस तरीके के अभी देखने में नजर आई। फरहान आरिफ दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज, जो कि अपने पहले ओवर में 14 रन दिए हैं, खासे महंगे साबित हुए थे। अब्दुर्रहमान ने 3 ओवर में 24 रन दिए हैं 8.00 की इकोनॉमी से। फरहान आरिफ की गेंद ऑफ स्टंप पे पड़ी है, इनको लिया है मिडिल स्टंप से, देखना पड़ेगा। एम्पायर वसीम का इशारा। 4 रन। पहली गेंद को मिडिल स्टंप से पिक किया खूबसूरती के साथ, डीप मिड ऑन बाउंड्री की तरफ। गेंद टप्पा खाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, और इन 4 रनों के साथ 66 रन। और इस बार अगले कदम पे आके स्वीप के अंदाज में खेले हैं, खेलने में कामयाब हुए। शॉर्ट लेग की जानिब फील्डर फील्ड करते, मौका था 1 रन का दोनों बल्लेबाजों के लिए। और इस बार अगले कदम पे ड्राइव किया है, उठता हुआ शॉट था लेकिन महफूज। तब तक कि डीप कवर पे फील्डर जाके उसे फील्ड कर रहे हैं, फील्डर के लिए मौका नहीं था। गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। अहमद हुसैन है ये बल्लेबाज, जो कि खेल रहे हैं। 19 रन पर 13 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके और 1 छक्का लगाया है अहमद हुसैन ने अपनी बारी में। फरहान आरिफ फिर से तैयार, इस बार लेग ब्रेक गेंद, रिस्क से लेग ब्रेक की कोशिश की थी लेकिन स्ट्रेटर रही गेंद, उसका फ़ायदा उठाया। ऑन साइड पे 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अहमद हुसैन पहुंचे 24 रन पर, फहाद अंजुम खेल रहे हैं 31 रन पर 20 गेंदों के साथ 6 चौकों की मदद से। फरहान आरिफ की गेंद फिर से लेग ब्रेक के स्टाइल से गेंद की थी, गेंद के स्पिन को ख़त्म करते हुए ऑन साइड पे खेले हैं डीप मिड ऑन की जानिब। फहाद तब तक के डीप मिड ऑन से फील्डर फील्ड कर रहे हैं, मौका है बल्लेबाजों के लिए। 1 रन का 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। फरहान आरिफ जो कि दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं, लेकिन पिछली 2 गेंदें हम देख रहे हैं लेग स्पिन के अंदाज से कर रहे हैं, रिस्क से कर रहे हैं। फरहान आरिफ फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार फिर से लेग ब्रेक गुगली गेंद थी, इस बार कट किया है उसे बैक फुट पर जाके
थर्ड मैन की जानिब, तब तक कि डीप थर्ड मैन पे जाके फील्डर फील्ड करे। मौका है बल्लेबाजों के लिए 2 रन का, 2 रन आसानी के साथ पूरे किए और 2 रनों के साथ छठे ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। छठे ओवर के इख्तिताम पर 75 रन, 75, कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर। फैक्टडेट विनिंग द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। और सर्किल का खेल अब ख़त्म हुआ। सर्किल में अच्छी बारी ली है फैक्टडेट के बल्लेबाजों ने, जबकि दोनों को एक एक ज़िंदगी ज़रूर दे बैठे थे कराची जिमखाना के फील्डर और एम्पायर रशीद का इशारा। ये सर्किल का खेल ख़त्म हुआ। अब तक सर्किल के खेल में तो खासे भारी हैं फैक्टडेट इंजीनियरिंग के बल्लेबाज, गो के एक एक ज़िंदगी मिल चुकी है दोनों बल्लेबाजों को। अब देखना पड़ेगा ये कहाँ तक ख़तरनाक साबित होते हैं कराची जिमखाना वाइट के लिए। वहाँ गेंदबाजी में तब्दीली नज़र आ रही है। फार एंड की ओर से राफे सफदर हैं बाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज। उनके लिए फील्डिंग की सजावट 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। राफे सफदर बाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज। राफे सफदर पाकिस्तानी घरेलू क्रिकेट का एक नाम है जो कि पीआईए को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। एक स्लिप के साथ पहली गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, ऑफ स्टंप पे पड़ी, इस गेंद को ड्राइव किया है अगले कदम पर, तब तक के डीप मिड ऑफ पे फील्डर जाके फील्ड करें। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। राफे सफदर के लिए फील्डिंग की सजावट 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे, एक स्लिप के साथ राफे लॉन्ग ऑफ लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, डीप मिड ऑफ भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए हमारी तरफ आते हुए राफे। इस बार ये गेंद अच्छी गेंद, लेग ब्रेक गेंद थी, ब्लॉक होल में गिरी। इस गेंद को बैकफुट पर जाके आसानी के साथ ऑन साइड पे ड्राइव करते हुए 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और 1 रन के साथ फहद अंजुम खेल रहे हैं। 33 रन पर अहमद हुसैन पहुंचे। 26 रन पर फहद सामना करेंगे राफे का। राफे बाहिने हाथ से राउंड द विकेट और इस बारी गेंद लेग ब्रेक गेंद थी। ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को कट किया है सीधा पॉइंट के फील्डर के हाथ में। राफे सफदर फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, बाहिने हाथ से राउंड द विकेट। और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, जल्दी करना पड़ी थी। बल्लेबाज फहद अंजुम को चौंकाया है। फहद अंजुम को राफे ने इस बार। वेल बोल्ड राफे, फहद अंजुम जो कि अच्छे बल्लेबाज हैं, एक ज़िंदगी के साथ बारी ले रहे हैं और इस बार बैकफुट पर गए हैं। फहद खेला है उसे डीप लॉन्ग ऑन की जानिब, तब तक के फील्डर आके उसे फील्ड करें आसानी के साथ। 1 रन पूरा किया और उसके साथ 34 रन पर पहुंचे हैं फहद अंजुम 25 गेंदों का सामना करते हुए। अहमद हुसैन है जो कि अब सामना करेंगे राफे सफदर का। एक स्लिप के साथ राफे सफदर और इस बार आगे गिरी इस गेंद को खेल दिया है अगले कदम पे ड्राइव करते हुए ऑन साइड पे डीप लॉन्ग ऑन से, तब तक फील्डर फील्ड करें। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इसी के साथ 7वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 7वें ओवर के इख्तिताम पर 79 रन, 79 राफे सफदर ने अपने पहले ओवर में 4 रन दिए। अच्छी किफ़ायती और कंजूसी वाली गेंदबाजी की है राफे ने।
और खासी हद तक बैकफुट पर ज़रूर किया है यहाँ फैक्टडेट इंजीनियरिंग के बल्लेबाजों को, जो कि खासी मौजूदा रन औसत 11.29। यहाँ कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी में तब्दीली हुई है। समीर अहमद आए हैं। समीर अहमद गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालेंगे। यहाँ कमेंट्री बॉक्स की ओर से समीर अहमद गालिबन दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज नजर आ रहे हैं। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 5 ऑन साइड पे। समीर ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं। पहली गेंद ऑफ ब्रेक गेंद, अगले कदम पे ड्राइव किया है, उसे उठता हुआ शॉट था, लेकिन फील्डर की पहुंच से बाहर गेंद टप्पा खाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए आते इस्तकबाल किया है समीर अहमद की पहली गेंद का। अहमद हुसैन ने 4 रनों के साथ अहमद हुसैन पहुंचे 28 रन पर 18 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 1 छक्का लगाया है अहमद हुसैन ने। और अभी साझेदारी, पार्टनरशिप कहना पड़ेगा, 83 रन की हो गई है। समीर की गेंद कट किया है, उसे खूबसूरती के साथ अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करते हुए स्ट्रोक के लिए जगह बनाते हुए खेले हैं। डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ एम्पायर वसीम का इशारा। 4 रन। अच्छा कट शॉट यहाँ अहमद हुसैन का, जो ही गेंद को थोड़ा सा कम फ्लाइट के साथ गिरते देखा, अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया, कट किया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई खूबसूरती के साथ डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ। 4 रनों के लिए अहमद हुसैन पहुंचे 32 रन पर। 36 रन पर इस चौके के साथ 20 गेंदों का सामना किया अहमद हुसैन ने। 5 चौके और 1 छक्का लगाया है। 180 का इकनॉमी रेट है। और इस बार उल्टे बल्ले के साथ खेले हैं, रिवर्स शॉट जिसे कहना चाहिए, डीप गली पॉइंट बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। अहमद हुसैन जो कि एक ज़िंदगी ले चुके हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से कमान के साथ खेल रहे हैं। उल्टे बल्ले से भी खेल रहे हैं, सीधे बल्ले से भी खेल रहे हैं, खूबसूरती के साथ जहाँ चाहे खेल रहे हैं, कमान के साथ कहना चाहिए। और ये वो जो कैच ड्रॉप हुआ था खासा महंगा साबित हो रहा है कराची जिमखाना के लिए। दोनों ही बल्लेबाज को एक एक ज़िंदगी दी है। और इस बार ऑफ स्टंप पे पड़ी इस गेंद को चॉप किया है, जिसे कहना चाहिए डीप कवर की जानिब। तब तक के फील्डर आके फील्ड करें, मौका है बल्लेबाजों के लिए 2 रन का। और 2 रन तेज़ी के साथ दौड़े हैं दोनों बल्लेबाज। विकेटों के दरमियान अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाजों की। जो ही डीप कवर के फील्डर को सुस्ताते देखा, ये दूसरा रन भी चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी दौड़ विकेटों के दरमियान इस बार पहले की निस्बत अच्छी गेंद, उसको उतने ही अच्छे अंदाज में धीमे से खेले हैं लॉन्ग ऑन की जानिब। जहाँ फील्डर मौजूद वहाँ रन भी मौजूद दोनों बल्लेबाजों के लिए। समीर फिर से तैयार, अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे फहाद अंजुम को। और इस बार टर्न किया है फहाद अंजुम ने आहिस्तगी के साथ। तब तक के डीप मिड ऑन के फील्डर आके फील्ड कर रहे हैं, मौका है बल्लेबाजों के लिए। फहाद अंजुम पहुंचे 35 रन पर। और अब अहमद हुसैन आगे निकल गए हैं फहाद अंजुम से। शुरुआत में फहाद अंजुम आगे थे, लेकिन अहमद हुसैन ने पीछे छोड़ दिया है फहाद अंजुम को। अहमद हुसैन खेल रहे हैं 43 रन पर, 43 पर। फहाद अंजुम खेल रहे हैं 35 रन पर। उसी के साथ 8वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 8वें ओवर के इख्तिताम पर 95 रन, 95
बगैर कोई विकेट खोए फैक्टडेट इंजीनियरिंग टॉस जीतकर पहले बारी लेते हुए यहाँ कराची जिमखाना के ग्रीन कारपेट पर 20-20 के इस मैच में 35वां कराची जिमखाना उमर एसोसिएट रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल 2022 का ये नवा मैच है जो कि खेला जा रहा है कराची जिमखाना वाइट और फैक्टडेट इंजीनियरिंग के बीच। और इस बीच राफे गेंदबाजी जारी रखेंगे फॉरन की ओर से। राफी की गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, स्वीप किया है, ऑफ स्टंप से लिया है उसे डीप मिड विकेट की तरफ। तब तक के फील्डर आके फील्ड करें। आसानी के साथ 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और 1 रन के साथ 96 रन 96। राफे गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज अहमद हुसैन को और इस बार कट किया है अहमद हुसैन ने, लेकिन यहाँ पॉइंट के फील्डर को बीट ना कर पाए। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। वेल बोल्ड राफे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। राफे तकरीबन ताला सा लगाया है बल्ले पर दोनों बल्लेबाजों के। इस बार उल्टे बल्ले से खेलना चाहते थे और ये किस्मत वाले रहे बल्लेबाज अहमद हुसैन। तारीफ करना पड़ेगी राफे सफदर की, जो ही रिवर्स एक्शन में देखा बल्लेबाज को गेंदबाजी में तब्दीली की, आर्म गेंद की, उससे पूरी तरीके से चुके थे। इस बार ये देखना पड़ेगा और ये बहुत ही तहाजंदानी थे ये, जिन्होंने बहुत ही एफर्ट तो की थी लेकिन पहुंच गए थे कैच तक। ये ड्रॉप चांस है। वेल बोल्ड राफे, जब से राफे आए हैं बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। राफे कमान के साथ कर रहे हैं, खासी हद तक बैकफुट पर कर दिया है फैक्टडेट इंजीनियरिंग के बल्लेबाजों को, जो कि खासे जाराना मूड में नज़र आ रहे थे। लेकिन यहाँ राफे की गेंदबाजी के सामने बेबस नज़र आ रहे हैं। राफे बाइने हाथ के रवायती गेंदबाज हैं, अच्छे हयाम एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं। राफे सफदर बाइने हाथ से राउंड द विकेट गेंद करेंगे एक स्लिप के साथ और ये दूसरी ज़िंदगी मिली है यहाँ अहमद हुसैन को। और इस बार स्वीप के अंदाज में खेलें, इस बार भी देखना पड़ेगा, मौके जैसी बात है। और ये बहुत ही अच्छी एफर्ट थी जिसे कहना चाहिए कैचर की, लेकिन बदकिस्मत रहे। ट्राई अच्छी थी लेकिन तारीफ़ करना पड़ेगी राफे सफदर की गेंदबाजी की, जिस तरीके से बल्लेबाजों को पीछे किया है। दूसरा ओवर कर रहे हैं, सिर्फ 7 रन है और इस बार लेग ब्रेक गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टपक आने के बाद और बार की तरफ जाती है। उस गेंद को आखिरी लम्हे तक देखा, जाने दिया विकेट कीपर के लिए और एक और डॉट बॉल वहाँ राफे की जानिब से। वेल बोल्ड राफे, 2 ओवर 7 रन दिए हैं राफे सफदर ने। खासी हद तक बल्लेबाजों को परेशान भी किया है और एक ज़िंदगी भी के करीब थे। मोहम्मद अहमद हुसैन थे जिनको ज़िंदगी मिली राफे की इस ओवर में। दूसरी ज़िंदगी है अहमद हुसैन के लिए, जबकि फ़हद अंजुम को भी एक ज़िंदगी मिली है। और यहाँ गेंदबाजी में तब्दीली हुई है कमेंट्री बॉक्स की ओर से। शाहजानी आए हैं गेंदबाजी के लिए। शाज दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज अपनी फील्डिंग की सजावट करते हुए पांच खिलाड़ी ऑन साइड पे, 4 ऑफ साइड पे। शाज दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज फहाद अंजुम को, जो कि 37 रन पर बारी ले रहे हैं। 28 गेंदों का सामना किया है, 6 चौकों की मदद से 132 के स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि 44 रन पर खेल रहे हैं। अहमद हुसैन और शाज की पहली गेंद को स्वीप किया है, मिडिल स्टंप से पिक किया है गेंद को। तब तक के डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर आके फील्ड कर रहे हैं। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। फहद पहुंचे 38 रन पर। अहमद हुसैन खेल रहे हैं 44 रन पर 27 गेंदों का सामना करते हुए, 6 चौके और 1 छक्के लगा के। 162 का स्ट्राइक रेट है अहमद हुसैन का। सामना करेंगे शाज का और इस बार बैकफुट पर जाके खेलेंगे इज्जत के साथ, धीमे से पॉइंट की जानिब। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए।
शाज फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज पवेलियन की ओर से अपनी फील्डिंग की सजावट करते हुए 5 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 4 ऑफ साइड पे शाज। और इस बार लेग ब्रेक के अंदाज में गेंद की थी, फ्लाइट हिट थी, देखना पड़ेगा फील्डर की पहुंच से दूर। एक टप्पा खाने के बाद फील्डर के हाथ में गेंद गई, उसका पूरा फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। और इस 1 रन के साथ 99 रन 99, और इस 1 रन के साथ 100 रन भी मुकम्मिल हुए फैक्ट डेट के लिए। 100 रन बगैर कोई विकेट खोए फैक्ट डेट। इस बार यह ऑफ ब्रेक गेंद मिडिल स्टंप की लाइन से पिक किया है, इसे देखना पड़ेगा तब तक कि डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की फील्ड करें। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। अच्छी किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे हैं शाज, अब तक सिर्फ 3 रन दिए हैं, 4 गेंद कर चुके हैं शाज। दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज बार उल्टे बल्ले से खेला है खूबसूरती के साथ, देखना पड़ेगा 6 रनों के लिए, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, अच्छा रिवर्स स्वीप। और कहना पड़ेगा जैसे हम कहते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था, उंगली टेढ़ी की और खूबसूरती के साथ 4 रनों के साथ खेले, 6 रनों के साथ खेले हैं। और इसी के साथ अहमद हुसैन अपने 50 रन भी मुकम्मिल किए हैं अहमद हुसैन ने। वेल प्लेड अहमद हुसैन, 2 जिंदगियों के साथ अहमद हुसैन 51 रन, 30 गेंदें, 6 चौके और 2 छक्के लगाए। ये छक्का तो बहुत ही शानदार था, रिवर्स बल्ले से खेला था क्योंकि शाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, गुड लेंथ पे कर रहे थे, लेकिन इस बार उंगली टेढ़ी की, घी निकाला जैसे कहना चाहिए। 6 रनों के साथ बहुत ही अच्छा शॉट, समझबूझ का शॉट, समझदारी का शॉट जिसे कहना चाहिए। और गेंद वहाँ जाके झाड़ियों में छुप गई है दूसरी गेंद के लिए एम्पायर ने। इस छक्के की कुव्वत इतनी सी राशिद, ये गेंद सामना नहीं करना चाह रही है, गेंद छुप गई झाड़ियों में जाके और एम्पायर ने दूसरी गेंद की कॉल की है। अहमद हुसैन खेल रहे हैं 51 रन पर 30 गेंदों का सामना करके 170 के स्ट्राइक रेट से, जबकि फ़ाद अंजुम खेल रहे हैं 39 रन पर। फ़ाद अंजुम 130 के स्ट्राइक रेट से, शुरुआत में फ़ाद अंजुम तेज़ खेल रहे थे, अच्छी बारी ले रहे थे, लेकिन अब अहमद हुसैन ने उनको ओवरटेक किया है। मौजूदा रन औसत 10.88 है, प्रोजेक्टेड स्कोर 218 रन बनता है। लेकिन ये परेशानी की बात है कराची जिमखाना वाइट के लिए, जब तक ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं 107 रन की साझेदारी बना चुके हैं 60 गेंदों पर। पैंतीसवां कराची जिमखाना उमर एसोसिएट रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल 2022 का ये मैच खेला जा रहा है। यहाँ कराची जिमखाना के ग्रोइंग कारपेट पर 10वें ओवर का खेल हो रहा है। कराची जिमखाना जो कि एक तारीखी ग्राउंड है। टेस्ट मैच खेला है, ये वाला फर्स्ट क्लास मैच, वो साइड मैच हुआ एमसीसी का। इस बीच शास की इस गेंद को धीरे से खेलते ही ऑन साइड पे रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज, विकेट कीपर जबकि जा, और यहाँ एम्पायर ने रेफर किया है रन आउट के लिए। थर्ड एम्पायर के पास रन आउट की अपील थी शास की जानिब से, एम्पायर वसीमुद्दीन ने यहाँ रेफर किया है। स्लो मोशन में दिखाओ, स्लो मोशन में दूसरे एंगल से दिखाओ।
खासा नज़दीकी मामला है। हाँ चलो आउट मेरे ख्याल से लग रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करो, वैसे ही एक्शन में लो। आउट आउट बटन किधर है? ये बटन बता दे मुझे किधर। बाकी मैं कह रहा हूं बाकी मैं संभाल लूंगा। वो वाला बटन काला काला बटन राम भाई से आउट। पॉज कर दो ना उधर। पटना डालू बाजे का इशारा कर दो। पटना डालू बाजे का इशारा कर दो। चाय के लिए निकल जाए इशारा करके तो आप निकल देखो ना, जाओ। आप देखो एक सेकंड, रिप्ले तो चल रहा है उसमें। थोड़ा सा वही अभी तक देख रहा है दोबारा। कहाँ है? इस पे लगाया है। फोन पे देख रहा है वो पिक्सल बूट है उसका। मेरा फोन लग एक मिनट टीवी तो लग रहा है। और अच्छा मुझे ना दीजिएगा। पॉज कर दो। अब देखिए जब विकेट हिट होती है इसका बैट बाहर है। बैट बाहर आउट आउट है वैसे। आउट है आउट है आउट कर देते हैं सब पेमेंट ही गई जानवर भी आउट है डायरेक्ट लगी ना थ्रो, बैट थ्रो का हुआ में आउट। कोई इशारा इशारा आउट आउट आउट, माइक को बोला माइक और ये आउट हो गए हैं। क्रिस से बाहर थे, अच्छी तरह वहाँ कहना पड़ेगी। यहाँ स्क्रीन पर डायरेक्ट थ्रो लगी थी जिसके नतीजे में बल्ला थोड़ा सा हवा में था, और यहाँ थर्ड एम्पायर की जानिब से आउट का इशारा। कौन आउट हुआ? कौन है? अहमद हुसैन हो गए। 10-107 अहमद हुसैन आउट होकर पवेलियन में आ रहे हैं। अच्छी थ्रो थी वहाँ फील्डर की। 10वें ओवर के अख्ताम पर 107 रन। पहली विकेट अभी अभी खोई है यहाँ फैक्टडेट की जानिब से। फैक्टडेट जो कि टॉस जीतकर बारी ले रहे हैं। अहमद हुसैन रन आउट होकर पवेलियन में आ गए हैं। अब नहीं जाने वाले बल्लेबाज
गजनफर हैं नए जाने वाले बल्लेबाज। तो उसने कीपर ने किया था ना। दिखाया इस कमेटी को भाई, इनको दिखाने भाई स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा यार? स्क्रीन में जो है वो पिक्चर पड़ता है किस थ्रो के कमर्शियल जो है वो फट रहा है। मैं आपको कीपर कप्तान है दिखा देगा तो मुझे। वैसे कप्तान है कीपर अब कीपर उसने थ्रो किया। अहमद हुसैन आउट होकर पवेलियन में आए। अच्छी थ्रो थी वहाँ उमर शेख की, और यहाँ फार एंड की ओर से गेंदबाजी में तब्दीली नजर आ रही है। कौन? बॉलिंग चेंज मोहम्मद माविया दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज मोहम्मद माविया फार एंड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालेंगे। माविया के लिए 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज को। इस बार गेंद लेग ब्रेक गेंद थी, खूबसूरती के साथ खेला है, बिल्कुल स्ट्रेटर बॉलर बैक ड्राइव की है। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था लॉन्ग ऑफ के लिए। गेंद बिल्कुल कारपेट के सहारे बाउंड्री लाइन के बाहर। एम्पायर रशीद का इशारा, 4 रन। कौन था बैट्समैन? गजनफर खान थे ये बल्लेबाज जिन्होंने आते ही खाता खोला अपना। और इस बार फ्लाइटेड गेंद को देखना पड़ेगा एक टप्पा खाने के बाद। डीप मिड ऑफ के फील्डर लेकिन उन्होंने खुद ने दिया, मैंने कुछ नहीं किया है। और वो जो आए थे कौन थे वो? थर्ड अंपायर कौन है मुझे आप ये तो बताएं। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कौन है कमेटी, कौन है? किसी से तो मैं पूछ सकता हूँ, मुझे कोई तो जवाब दे बंदा। माविया की गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, टर्न किया है उसे तब तक कि डीप स्क्वायर लेग से फील्डर आके फील्ड करे। थोड़ा सा पीछे पॉज करें ताकि पता तो चले। मौका था बल्लेबाजों के लिए। नहीं, थोड़ा सा एयर में है बल्ला एयर में डायरेक्ट थ्रो लगी है। हाँ, डायरेक्ट लगी है। वो छोड़ो, डिसीजन किसने दिया? कमेटी का नाम को बंदा जिसने डिसीजन उसका नाम इधर ले तो ऊपर कैमरा में। और इस बार कट किया है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग है वहाँ गली की जानिब फील्डर की, जहाँ कहना पड़ेगा 4 रन होते। नहीं वो रखो हवा में। माविया की गेंद अच्छी गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, धीमे से स्लिम मिड ऑफ की जानिब खेलते ही 1 रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज। जब तक विकेट कीपर जाके गैदर करते, मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। आपने बोला कहने में जो बंदे आए थे ना उनके कहने पर मैंने डिसीजन लिया, अपने को कोई चीज नहीं। ठीक है, बोला आउट करना हो। इस बार कट किया है गली की जानिब, फिर से डॉट बॉल वहाँ माविया की जानिब से। अच्छा ओवर किया है माविया ने। 11 ओवर अच्छा किफ़ायती ओवर किया है माविया ने, 7 रन दिए हैं माविया ने। 11वें ओवर के इख्तिताम पर 114 रन, 114। मेरे पास अपडेट ही नहीं हुआ अभी यार। नहीं वैसे डायरेक्ट देखो ना लगी है, बल्ला हवा में देखो लगी, यहाँ देखो ये सही बता। तो बल्ला देखो कहाँ पे और बॉल लगती जा भी चुकी। हवा में था बता। हाँ थोड़ा पीछे रोका हुआ है। हाँ यहाँ थोड़ा रोका कोई भी आएगा। हाँ हवा में क्योंकि बॉल लग चुकी है, इससे और पीछे कर लो तो लगी भी आ जाएगी।
यहाँ कमेंट्री बॉक्स की ओर से शाहजहानी तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज शाज। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 5 ऑन साइड पे। इस बार मिडिल स्टंप पे पड़ी गेंद, फ्लाइटेड गेंद थी, स्वीप करना चाहते थे, पूरी तरीके से चूके। एक उम्मीद के साथ और एक आस के साथ शाज ने एम्पायर की तरफ इल्तिजा ज़रूर की थी, लेकिन एम्पायर वसीम उद्दीन अनमूव रहे। शाज फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। गेंद करेंगे। इस बार गेंद ऑफ ब्रेक गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती है। उस गेंद को बैकफुट पर जाके कट किया उसे खूबसूरती के साथ। तब तक कि गेंद थर्ड मैन पे फील्डर जाके फील्ड कर रहे हैं। मौका है बल्लेबाजों के लिए 3 रनों का। 3 रन आसानी के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, और 3 रनों के साथ 117 रन, 1 विकेट खोकर 12वें ओवर का खेल हो रहा है। गजनफर खान पहुंचे 9 रन पर। फहद अंजुम खेल रहे हैं 40 रन पर। और इस बार गेंद अच्छी गेंद ब्लॉक होल में की गई। इस गेंद को जल्दी करनी पड़ी थी टर्न करने के लिए ऑन साइड पे। तब तक विकेट कीपर जाके वहाँ स्क्वायर लेग की जाने फील्ड करते। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। शाहजहानी अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं और अब तक 13 रन दे चुके हैं। शासकीय गेंद, फ्लाइटेड गेंद। जो ही गेंद को फ्लाइट करते देखा, क्रीज से बाहर आए, कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव किया उसे ऑन साइड पे। वहाँ मिस फील्ड हुई, उसका पूरा फ़ायदा उठाया और 2 रन दौड़ के बना लिए दोनों बल्लेबाजों ने। हमारे सामने से जाम नफीस साहब, जो कि इंतहाई नफीस इंसान भी हैं। आउट किसने दिया था? वो रोयल भाई और वो आए थे, क्या नाम है, ममदू भाई। रोयल भाई कमेटी ने दिया ना, ठीक है ना। अब थर्ड और इस बार अच्छी गेंद। बुलवा लो ऊपर से, ठीक उसको बोलो आके बैठा कर यार, तुम बन जाओ ना थर्ड मैच। अरे तुम तो ऐसे ही नहीं चल जो नजर आता है इसमें ना। आउट था, मुझे आउट लगा था। नहीं अभी दिखाया जब इसका बल्ला दिया हवा बल्ला हवा हवा। शाज फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर और इस बार खेल दिया है स्ट्रेटर पर। बिल्कुल फरहान आरिफ है जो कि बहुत ही अच्छी एफर्ट के साथ 4 रन बचाए हैं अपने बल्लेबाजों के लिए, अपनी फील्डर के लिए। फरहान आरिफ ने, करीबी मामला था, बाउंड्री हो सकती थी, लेकिन फरहान आरिफ ने लपकते हुए गेंद को लिया और बल्लेबाजों को सिर्फ 1 रन पर मजबूर रखा। और इसी के साथ 12वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 12वें ओवर के इख्तिताम पर 21 रन, 121 रन, 121। शाज ने 2 ओवर में 16 रन दिए हैं। माविया जिन्होंने अपने पहले ओवर में 7 रन दिए थे। मौजूदा रन औसत 10.08, प्रोजेक्टेड स्कोर 202 है अगर इसी रफ्तार से खेलते रहे। लेकिन वहाँ माविया दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। इसी फील्डिंग की सजावट के साथ माविया डीप कवर लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, डीप लॉन्ग ऑफ भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, ऑन साइड पे डीप मिड ऑन भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, डीप मिड विकेट भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए और डीप स्क्वायर लेग भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए। इस बीच माविया की गेंद फ्लैटेड गेंद थी, खेला है उसे, देखना पड़ेगा फील्डर के लिए। कोई मौका नहीं, कोशिश ज़रूर की थी फील्डर ने पैर डाल के रोकने की, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एम्पायर रशीद का इशारा, 4 रन। गजनफर खान है ये बल्लेबाज। यूं ही गेंद को थोड़ा सा फ्लाइटेड गिरते देखा, गेंद पर माविया फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। गेंद
लेग ब्रेक गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती है। इसके गेंद को स्पिन के साथ कट करना चाहते थे, कमान के साथ नहीं खेल पाए, गेंद गई गली में, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। माविया फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। इसी फील्डिंग की सजावट के साथ हमारी तरफ आते हुए माविया गेंद करेंगे गजनफर को, और इस बार अच्छी गेंद खेलना चाहते थे गजनफर, क्योंकि पूरी तरीके से, और एक डॉट बॉल खेल बैठे हैं यहाँ गजनफर, जो कि 16 रन पर बारी ले रहे हैं। 12 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके लगाए हैं गजनफर पे, गजनफर ने, और वहाँ फहद अंजुम दूसरे एंड पे अच्छी बारी के साथ 41 रन, और इस बार कदमों का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया, क्रीज से बाहर आए, फुल टॉस बनाते हुए तकरीबन खेले हैं डीप लॉन्ग ऑफ की जानिब, तब तक के फील्डर आके फील्ड करें। एक ही रन बनाया बल्लेबाजों ने, लेकिन जो ही फील्डर को झपटते देखा था, दूसरे रन की हिम्मत ना दिखा पाए, अपने कदम वापस क्रीज में खींचे दोनों बल्लेबाजों ने, और एक ही रन पे अपने आप को। और इस बार माविया की गेंद ऑफ स्टंप पे पड़ी, इस गेंद को शफल किया है, खूबसूरती के साथ पुल किया है उसे, डीप मिड विकेट के फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद टप्पा खाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, एम्पायर रशीद का इशारा, 4 रन। माविया फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज गेंद करेंगे फहद अंजुम को, और इस बार उल्टे बल्ले से खेले हैं, स्वीप किया है, रिवर्स स्वीप। फहद अंजुम ने गेंद डीप गली पॉइंट की तरफ, 4 रनों के लिए। 13वें ओवर के अख्ताम पर 134 रन, 134 फहद अंजुम पहुंचे 49 रन पर, और सिर्फ 1 रन की दूरी पर फहद अंजुम अपनी शानदार निस सेंचुरी से, क्योंकि एक ज़िंदगी ज़रूर मिली है फहद अंजुम को, उस ज़िंदगी का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया है फहद अंजुम ने, और अपने बल्लेबाजों को एक इज़्ज़त बख्श मकाम दे रहे हैं फहद अंजुम, जो कि सलामी रूप में आए थे, इनिंग का आगाज़ किया था। क्रीज पर मौजूद हैं 49 रन पर, 35 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौकों की मदद से 140 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं फहद अंजुम, जबकि उनका साथ दे रहे हैं वन डाउन आने वाले बल्लेबाज गजनफर खान। 17 रन बनाए हैं, 13 गेंदों पर 2 चौके लगाए हैं। मैं कुछ नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ बैठा हूँ अपनी स्कोरिंग कर रहा। और यहाँ कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालेंगे फिर से फरहान आरिफ, दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं फरहान। फरहान आरिफ दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, कदमों का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हुए खेले हैं ऑन साइड पे, तब तक कि डीप मिड विकेट के फील्डर आके फील्ड करें। मौका है बल्लेबाजों के लिए, 1 रन का, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और उस 1 रन के साथ गजनफर पहुंचे। फहद अंजुम सामना करेंगे, जो कि 49 रन पे बारी ले रहे हैं, 1 रन की दूरी पर हैं फहद अंजुम, और इस बार पुल किया है डीप मिड ऑन बाउंड्री की तरफ, तब तक के फील्डर फील्ड करें, और इसी के साथ 50 रन भी मुकम्मिल किए हैं फहद अंजुम ने। वेल प्लेड फहद अंजुम 50 रन, 36 गेंदों का सामना किया फहद ने, 8 चौके लगाए हैं, 141 का स्ट्राइकिंग रेट है फहद का।
गजनफर सामना करेंगे फरहान आरिफ का। इस बार गेंद अच्छी गेंद लो ट्रेजेक्टरी के साथ की गई, इस गेंद को धीरे से कट किया है डीप थर्ड मैन की जानिब, देखना पड़ेगा तब तक के फील्डर जाके फील्ड करें। एक रन पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और इन 2 रनों के साथ 138 रन, 1 विकेट खोकर फैक्टडेट टॉस जीतकर पहले बारी लेते हुए यहाँ कराची जिमखाना के ग्रीन कारपेट पर फरहान आरिफ फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। 5 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 4 ऑफ साइड पे, और इस बार गेंद अच्छी गेंद और मचलते हुए अंदाज में एम्पायर से इल्तिजा की थी फरहान आरिफ ने, लेकिन एम्पायर अपनी जगह अनमूव। बिल्कुल मचल से गए थे गेंदबाज एम्पायर के सामने, लेकिन एम्पायर ने कोई भी वहाँ कहना पड़ेगा कान नहीं धरे उनकी इस अपील पे, और इस बार मिडिल स्टंप पे पड़ी इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब। देखना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी फील्ड वहाँ लॉन्ग ऑन के फील्डर में 4 रन बचाए हैं ज़रूर, 2 ही रन पर सिर्फ 2 रन बचाए, कहना पड़ेगा 4 रन हो सकते थे। फरहान आरिफ फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज गजनफर खान को 22 रन पर खेल रहे हैं, गजनफर 50 रन पर खेल रहे हैं। फहाद इस बार एम्पायर का इशारा, स्कोर बोर्ड लगाओगे, और फिर रेफर किया है यहाँ एम्पायर वसीम ने थर्ड मैन के लिए। क्या कौन सा देखो किस चीज़ के लिए, इससे पहले क्या हुआ देखो वही कहा था। हाँ देखो जरा ये बोल देखो थ्रो की थी इसने, क्या हुआ उसके पैर से लगी है मेरे ख्याल बैट्समैन के ना, देख अभी देखना वो ड्राइव किया ना उसने, इसने जो ये चौका वो तो हमने दूसरा रिप्ले ले लिया, हम तो दूसरा रिप्ले पे चले गए, ये वाले चौके को बोला। अरे बहुत लेट किया था उन्होंने ऐसा ना, जब और यहाँ एम्पायर ने रेफर किया है उस बाउंड्री का जो कि बचाई थी। हाँ लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल 5वीं बॉल है। और यहाँ बाउंड्री बचाई है, 2 रन है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। फील्डर का नाम क्या है? साद अंदानी से ये फील्डर जिन्होंने डाइव लगाते हुए बाउंड्री बचाई, बहुत ही अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए हैं ये, वेल फील्ड। एम्पायर ने ये बाउंड्री रेफर की थी, लेकिन बाउंड्री बचाई है ये फील्डर ने, और सिर्फ 2 रन पर
महदूद रखा बल्लेबाजों को। इन 2 रनों के साथ 140 रन। फरहान आरिफ फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंद करेंगे। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 5 ऑन साइड पे। इसी फील्डिंग की सजावट के साथ फरहान दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज गेंद करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज को इस बार क्रीज से बाहर आए देखना पड़ेगा। गेंद उड़ान भरती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से, एम्पायर वसीमुद्दीन का इशारा, 6 रन। भरपूर कुव्वत वाला शॉट। जो ही गेंद को फ्लाइटेड गिरते देखा, कदमों का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया, खेल दिया उसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। गजनफर खान थे ये बल्लेबाज जिन्होंने बड़े दिल का शॉट खेला है यहाँ। इसी के साथ फरहान आरिफ का ये तीसरा ओवर ख़त्म हुआ। तीसरे ओवर के मुकम्मिल होने पे फरहान आरिफ ने 39 रन दिए हैं अपने कोटे के 13.0 की इकनॉमी से। और वहाँ राफे सफदर अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए, बाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज। राफे बाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज बाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंद करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज फहाद अंजुम को, जो कि अच्छी बारी ले रहे हैं, 50 रन पर खेल रहे हैं। 36 गेंदों का सामना किया है, 8 चौकों की मदद से 138 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। फहाद अंजुम सामना करेंगे राफे सफदर का। और ये साझेदारी दूसरी विकेट की 39 रन की अब तक हो चुकी है। 24 गेंदों पे 39 रन बनाए हैं इस साझेदारी में दूसरी विकेट की। गजनफर खान और फहद अंजुम ने राफे की गेंद, फ्लाइटेड गेंद, बहुत अच्छी गेंद, मिडिल स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती उस गेंद को स्वीप करना चाहते थे, पूरी तरीके से चूके। किस्मत वाले रहे कि गेंद उनकी विकेटों से ना जाके टकराई, पूरी तरीके से चूके थे। वेल बॉल्ड राफे सफदर बाहिने हाथ से राउंड द विकेट। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है राफे सफदर की, देखना पड़ेगा। गेंद पर स्ट्रेटर शॉट था, एक टप्पा खाने के बाद गेंद डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ। तब तक के फील्डर आके फील्ड करने मौका था बल्लेबाजों के लिए। 2 रन का 2 रन आसानी के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। और इन 2 रनों के साथ फहद अंजुम पहुंचे 52 रन पर। राफे सफदर अब तक 2.2 ओवर कर चुके हैं, 9 रन बनाए हैं, 9 रन दिए हैं, सॉरी, और 3.8। और बार फिर से अच्छी गेंद, फिर से चूके। और ये वाइट का इशारा यहाँ एम्पायर रशीद खान की जानिब से। राफे सफदर फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंद करेंगे फहद को। और इस बार खेल दिया है, उठता हुआ शॉट है, देखना पड़ेगा फील्डर की गेंद की पहुंच से दूर। और ये थोड़ी सी अगर एफर्ट करते फील्डर तो शायद मौके जैसी बात होती, लेकिन तारीफ़ करना पड़ेगी राफे सफदर की। जो ही बल्लेबाज के को कदमों का इस्तेमाल करते देखा, गेंदबाजी में तब्दीली की थी। और बल्लेबाज फहद अंजुम जो कि अच्छी बारी ले रहे हैं, गालिबन रोज़े की हालत में हैं, तारीफ़ करना पड़ेगी फहद अंजुम की बारी की। बड़े दिल की बारी खेली है फहद अंजुम ने। वेल प्लेड फहद। इस रोज़े की हालत में फहद अंजुम जिस तरीके से बारी ले रहे हैं, और इस बार स्वीप के अंदाज में खेले हैं। गजनफर डीप मिड डाउन की तरफ 1 रन के लिए। और इसी के साथ मैं आगे का आंखों देखा हाल अपने साथी कमेंटेटर उमर खान को देता हूं अंग्रेजी में कमेंट्री के लिए। उमर खान, नाउ ओवर टू उमर खान। Thank you, Mr. Mirza Qamar Beg. Karachi Gymkhana playing their opening game against Factdate. So far, it's all been Factdate. Brilliant performance so far. All batsmen have played their role. Ahmed Hussain scored 51 of 31. And that's well bowled.
beat everybody, the batsman, the keeper, and 2 runs added to the total. So 152, 54 now at the end of 15 overs. So they're going at over 10 runs an over. So far in the innings, Ahmed Hussain scored a brilliant 51 of 31 deliveries, 6 fours and 2 sixes. Fahad Anjum is unbeaten on 54 of 40, including 8 boundaries. And Ghazanfar Khan has looked good so far with his 2 boundaries and a 6, batting on 31 of 20. If we talk about the bowling so far, Karachi Gymkhana's bowling haven't been on song today. The only bowler who bowled well and economically was Rafe Safdar. Gave away 15 runs in his 3 overs. The rest have been expensive. We're into the 16th over now. With 9 wickets in hand, Factdate will be eyeing the 200 mark from here. Shahjani will now bowl the 16th over. Given away 16 runs so far in his 2 overs. First ball of the 16th over, well bowled. The batsman used his feet, beaten in the flight, and he's gone. Stump out. Well bowled by Shahjani. He's a smart operator. He saw the batsman coming, pulled the length of the ball, and batsman completely beaten. Fahad Anjum is the batsman dismissed. Captain of the team playing a captain knock, scored 54 of 41 deliveries, 8 boundaries included in the innings. Now can Gymkhana pull back the game? Rizwan Qureshi now in at number 4. Factdate going at over 10 runs and over currently. And we've seen anything above 160 is a decent total here. But they're looking for well above that today. If somehow Gymkhana can restrict them around 180, they'll still continue their batting with momentum shift towards themselves. So now Rizwan Qureshi will be on strike. Shahjani to continue his 3rd over. He picked up a wicket on the very first ball, making slight changes in the field. And he's taken a slip in the 16th over of a T20 game. So slip in for the new batter. We have a long leg, mid wicket, long on, long off, deep covers. Point covers no fielder on the leg side in the circle. This time flighted delivery onto the pad. He's guided it towards the long leg boundary. It was a vacant area, and that's the boundary. He's taken an offside field and bowling on the pads. That was a bad ball. You have to bowl according to your field.
You've taken the field completely on the offside. The batsman expecting the ball to be outside off stump and was right there on the pads. A free hit for the batsman, Rizwan Qureshi off strike on the very first delivery. Third ball of the over, this time outside off stump, and he's heaved it towards the long leg fielder. 1 run added to the total. But that was a better length. He was inviting the batsman to play against the spin. So 5 runs of the first 3 deliveries. 159 for 2. Factdate, we're into the 16th over. And now Ghazanfar Khan back on strike. He is batting on 31. More changes to the field. So we have a 5-4 field for the right-handed batsman. This time onto the middle stump. Well bowled. Better line from Shah Shahjani. The batsman wanted to hit it over mid-wicket. Completely missed the line of the ball. So well bowled. 5 runs of the over, including that boundary of the second ball. 2 balls remaining in the over. This time another flighted delivery. This time connected. And over mid-wicket for 6. And with this 6, the over is completely changed. It started off with a wicket, went for a boundary, and now a 6 of the 5th ball. So 11 runs of this over so far. Still 1 ball remaining, and Ghazanfar Khan, he wanted to hit the ball over mid-wicket on the previous one. He missed that one, but this time made no mistake and hit it over mid-wicket for 6. Last ball of the over again. He's used his feet and launched it over the head of the bowler. And they're coming in for 2. The throw is on the danger end, but he makes it safely in the end. So 13 runs of that over. A wicket and 13 runs, but Factdate are on track for a big total here. They must be eyeing 210, 220 from here, the way they are going. 13 runs of the 16th over, 167 now for 2. They still have 8 wickets remaining. Factdate lost their first game. They were chasing in that game. They were on song and lost track. This time around, they're batting first and going pretty strong. So Mohammad Mawia in for his 3rd over. He's conceded 20 runs of his first 2 overs. Now, first ball of the 17th over, 167 for 2. This time, bowled well and missed everybody. The batsman, the keeper, and this will just stop before the boundary. Fielded by Taha Zindani, but 3 runs added. They just ran 1. That's a surprise. So they just ran 1. That's a surprise. I thought they ran 3. So no real harm done. Only 1 run added. But that was beautifully bowled. Mawia bowling 2nd ball of his over, 17th over. This time another beautiful delivery.
He's bowling it quick and he's bowling it wicket to wicket. No time for the batsman to make room. He started well. Can he end well? That is the big question. Third ball of the 17th over. This time flight delivery, converted into a full toss and hit it straight over the head of the fielder, but no real damage done. On another single added. So 2 runs of the first 3 deliveries. It has been a decent over so far. And if Mavia can end this over well, 10-20 runs difference at the end can make a big difference. This time another quick delivery, used his feet but straight to the deep cover region. 1 more run added to the total. Factdate now 170 for 2, 2 balls remaining in the 17th over. This time quicker delivery and a switch hit by Ghazanfar Khan. Smart cricket. It was over the head of point fielder and 4 runs added. The overs are now 7 runs of 5 deliveries. It was a decent over so far. It wasn't a bad ball, but the shot played by the batsman was amazing. He saw that the ball was outside off stump. It was quick, switched hit, over point for 4. 174 now. What started off as a decent over can turn into an expensive one if Ghazanfar is able to get a boundary on the last ball of the over. The last ball of the 17th over, 7 runs of the over so far. This time ball straight and spun sharply. Batsman beaten, so 7 runs of that over, a decent over. 174 for 2. Factdate. 3 overs remaining in the innings. And another bowling change. Farhan Arif will bowl from the pavilion end. First ball of the 18th over. This time bowled well. Opportunity, but did not carry to the fielder at long off. So 1 run added. 175 now. Factdate. Second ball of the 18th over. Farhan Arif has been expensive today. Conceded 40 runs so far. This time down the leg. It was a free hit for the batsman. All he needed to do was to get some connection. 4 more runs added to the total. So the misery for Karachi Gymkhana continues. 178 for 2 now. Still 16 balls remaining. Factdate must be eyeing the 210, 220 mark from here. From the word go, they kept on going.
Second ball of the 18th over. This time, ball on middle stump. The batsman made room and hit it towards the long leg region. Back-to-back boundaries. And Ghazanfar Khan has reached his half century with that hit. 52 of 29 deliveries. Brilliant batting. All top three have scored half centuries for Factdate. And Ghazanfar has scored the quickest of them all, including 5 boundaries and 2 sixes. Brilliant batting. And the best part is he's hitting runs against his own club. Fourth ball of the over this time, used his feet and hit it towards the mid-wicket region. 1 run added to the total. So 10 runs of the first 4 deliveries. His partnership has now moved to 30 of 15 deliveries. Factdate 184 for 2. 2 balls remaining in the 18th over. Now change in field as the left-handed batsman is on strike. Rizwan Qureshi batting on 7. This time ball was outside off stump. He wanted to hit it in the vacant mid-wicket region, but straight to the long-on fielder. 1 run added to the total. So 11 runs of the first 5 deliveries. 1 ball remaining in the over. 185 for 2. Factdate. 2 overs remaining in the innings. In fact, 13 balls to go. How much more runs can Factdate add in these last 13 deliveries? This time fuller delivery of low full toss outside off stump. Hit straight to long off. So 1 run added to the total. 12 runs of the 18th over. Another expensive one. Farhan went for 51 runs in his 4 overs. While another change in the bowling, Rafi Safdar will bowl from the club road end. He has been the most economical bowler for the day. Conceded only 15 runs in his 3 overs. Looking at the scoreboard, that's extremely brilliant bowling, as all other bowlers have went almost 10 runs and over 10 runs and over, or near 10 runs and over. So can Rafi finish well? 186 for 2. 2 overs remaining. So Rafi Safdar will bowl to Ghazanfar Khan, who's batting on 54 of 31 deliveries. Striking it really well. He's hit 5 fours and 2 sixes so far, batting at strike rate of 174. First ball, and he's ready for a switch hit and beaten. Even the wicketkeeper got beaten. We have to see the signal from the umpire, and it's signaled as a bye. Second ball of the 19th over. So Ghazanfar is off the strike. Rizwan Qureshi on strike. The left-handed batsman on strike, Rafi Safdar, ready to bowl the second ball of this over. This time another switch hit and another miss. So if the batsman can hit straight, I wonder why they're trying to switch hit. So 2 consecutive switch hits, 2 consecutive singles. Ghazanfar now back on strike. 2 runs of this over so far, 4 balls remaining.
Flighted delivery this time. Batsman used his feet but couldn't connect. So a dot ball, a golden dot ball. In the 19th over, so 2 runs of the first 3 deliveries. Rafe bowling exceptionally well. This time flighted delivery and he's alright. It's given to the third umpire. He lost his footing. It was really well bowled. It was a slower delivery. And we're checking for the stumping. His ball slower through the air. He was beaten. Pause करिएगा. Speed इसकी slow करके pause करें. And he's gone. Almost on the line. He was inside. He just lost his balance at the end. So Rafe bowling really well. Tariq Haroon is the new batter. No, क्या मैच हुआ यार. 26 रन और 7 विकेट बाकी है मेरे पास और एक ओवर में 7 रन. इकबाल भाई सिंगल लेके सामने चले गए. इकबाल से 7 रन का नॉट आउट है. वहाँ चले गए 1 पे 2 टाई हो गया मैच. बेवकूफ़ी में हारे. बेवकूफ़ी में हारे. मैं हारना ही बोलूँगा उनको. मैं हारे ही है वहाँ से. Tariq Haroon now on strike. Rafi bowling exceptionally well. Given away 2 runs and picked up wicket. Well set batsman this time. Flighted delivery and beaten again. What brilliant bowling by Rafi. Just 2 runs and a wicket so far of the 19th over, where the entire team has gone over 10 runs and over. He's bowled exceptionally well. Conceded only 16 runs. Last ball of Rafi's spell. This time another flighted delivery on to the middle leg stump. Hit towards the long on region. 2 runs added to the total. So Rafi finishes with 18 runs and a wicket. Factdate 190 for 3 after 19 overs. Two new men on the crease. Tariq Haroon and Rizwan Qureshi will face the last over. Shaz Shahjani will bowl the last over. He's conceded 29 runs of his first 3 overs. Rizwan Qureshi will be on strike. दूसरे में धोनी के लिए डेनिम ग्राफ अपना एक जीता एक हारा है. फैक्टडेट भी आज एक जीत जाएगा एक हार जाएगा. मतलब जिमखाना हार गई. First ball of the last over launched towards the long on field. No timing
on the balls, only 1 run added. बता दो कौन सा बैट्समैन 200 रन कर सकता है एक सभी रहना Second ball of the last over. This time is launched towards the mid-wicket fielder, straight in the hands फरीद कासी of Farid Kasi. Simple, straightforward catch. Shah Shajani picks up a wicket. So Gymkhana has stopped the run flow in the last 2 overs. Factdate were looking to go over 200, comfortable to go over 200. The last over by Rafi Safdari conceded 4 runs and मुझे 22 बताने कितने हैं 22 22 ठीक है मुझे पैसे पे डाल दे स्ट्राइक्स में है 22 ये क्या होगा तारीख कौन याद है कामिल महमूद फुल स्कोर कार्ड डालना पड़ेगा third ball of the over this time. He's hit it and it's one bounce to the boundary. The fielder had ample amount of time but beaten. 4 runs added to the total. This time onto the middle stump, hit towards the long mid-wicket region. 1 run added. It was running for the second one and missed by Shaz. He just launched the bails with his hand. It was a straightforward run out if he collected the ball cleanly. But 2 runs added. So now 197 Factdate with 2 balls remaining. This time hit towards the mid-wicket region. Another single added to the total. So 198 Factdate. Last ball of the 20th over. Shah Shajani this time hit towards the mid-wicket fielder. Deep long on, wide long on, fielded it. 1 run added. So 199 for 4 Factdate. Target is exactly 200 for Karachi Gymkhana. Ahmed Hussain, Fahad Anjum, Ghazanfar Khan, all 3 top 3 batsmen getting half centuries for Factdate. The pick of the bowlers for Gymkhana was Rafi, who gave away 18 runs and picked up a wicket. Abdur Rahman gave away 24 runs in his 3 overs. Mavia conceded 26 in his 3. Shah Shajani picked up 2 wickets for 38, and the rest of the bowling was quite expensive. So 200 is the target for Karachi Gymkhana. They'll start their innings after an innings break. So we'll continue after a short break. 200 is the target for Karachi Gymkhana.
Okay. Match comes on Friday, number 9. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum and a very good afternoon here from the lovely green, lush green cricket grounds, the historic cricket grounds of the Karachi Gymkhana. And this is the 9th match of the 35th Karachi Gymkhana RAMZAN Cricket Festival, which is being played for the Umar Associates Trophy. This is the 9th match on Friday, the 13th of Ramzan. This is between the Karachi Gymkhana Whites and versus Factdate Engineering. Toss was won by Factdate and they elected to bat. They scored a total of 199 and the target for Karachi Gymkhana Whites to win this match is 200. We have umpires Wasimuddin and Rashid Khan supervising the proceedings here. Umpire Wasimuddin from the Governor's House end, and Rashid Khan will be supervising from the club road. And then the umpires are out in the center, Gymkhana openers are out there as well, and the Factdate engineering team slowly walking into the square in the middle. क्या ओपनर कौन ताहा जिंदानी अरसलान मलिक कौन ताहा जिंदानी अरसलान मलिक ताहा लेफ्ट हैंड ताहा जिंदानी हमदानी जिंदानी जिंदानी और दूसरा कौन सा दूसरा अरसलान मलिक कौन माल अरसलान मलिक वो राइट हैंड अरसलान मलिक राइट हैंड बॉलर है Okay. Karachi Gymkhana openers, Taha Zindani and left-handed batsman, and Arsalan Malik is right-handed, and they are out there in the middle. And play about to get underway in this 35th, in the 9th match on the 13th of Ramzan. In this 35th Karachi Gymkhana Ramzan Cricket Festival being played for the Umar Associates Trophy between Karachi Gymkhana Whites and Factdate Engineering. An umpire signaling to the scorer this innings, Karachi Gymkhana innings about to get underway. Bowler Islam Khan. And Factdate is opening the bowling from the club road end with Islam Khan. Left hand. This one, the ball kept low outside the off stump, and Taha could not get to it, and no runs, no damage done, 1 ball bowled. Islam Khan to Taha Zindani. This one, my word, let's see what the umpire signals. Yes, he's signaling a bye. So the Karachi Gymkhana has opened their account with a bye. Now it's going to be Islam Khan, he'll be bowling to Arsalan Malik, right-handed Arsalan Malik. And it's Islam Khan from the club road end. Field being changed, adjusted for the right-hand batsman. We have one fielder out there on the boundary, on the square-leg boundary, and इधर कोई है fielder boundary. And we have one man on the boundary at third man, Islam Khan, left-handed.
And this one has been swatted to mid off no run straight to the fielder. And this ball rising. Left-handed bowler, Islam Khan of Factdate Engineering, and he is going to be bowling to Arslan Malik of the Karachi Gymkhana Whites. Here he comes at the wicket. This one and signaled a wide and 4 wides. The wicketkeeper couldn't get to it. This was way outside the leg stump, straying down the leg side seriously, and 4 runs, 4 wides. That takes the score on to 5. 6 out of which 5 are extras. And this ball will have to be bowled again. 6 extra. Oh, 6 extras, I'm sorry. Here comes Islam Khan. This one. Oh, and he's been dropped. This may prove fatal for Factdate. Rizwan Qureshi at mid-on dropped a dolly catch. And good omen for Karachi Gymkhana Whites. Here comes Islam Khan, and he will be bowling to Arslan Malik. This one has been excellent shot there by Arslan. 4 runs. He just swatted the ball, perfect timing, and square leg boundary. The fielder was not very far away, but this was really hit well, timed well, and it streaked to the boundary. Crossed the ropes, 4 runs. That takes the score on to 10. 10 for no loss, and this is the first over being bowled there by Islam Khan. He's been straying. This one. Good ball. He's been hit on the pad. And that is the end of the over. This is the first over bowled by Islam Khan, and Gymkhana Whites are 10 for no loss. There was a chance in this over, and it went begging. Kamil Mahmood. And it's going to be Kamil Mahmood from the governor's house. And fast bowler, right-handed cap. And Kamil will be bowling and going to the top of his, marking out his run-up, and having the captain having a discussion with him. We have a mid-wicket on the fence, and here comes Kamil. And this one's been cut over the inner circle, 4 runs. Good shot there by Taha Zindani. Opened his arms, and this one was gave him the width, Kamil, and he made full use of his Taha. Ball getting back to the bowler, Kamil Mahmood. That was a loosener. Here he comes, left-handed Taha. This one, a better delivery, and Taha couldn't do anything about that one. The ball just dropped there. No runs, no damage done. Here we go. Kamil Mahmood to Taha. And let us see, this one's been lovely shot there to long off. And umpire Wasimuddin signals for boundary. That takes the score on to 18.
18 for no loss, and this is the second over being bowled. The required run rate is 9.84. required run rate is 9.84, and they seem to be almost there. Here he comes. Kamil to Taha. This one wide outside the off stump. No runs. It was an almighty flash there from Taha. Tried to drive it, failed to make contact. The ball was wide. No runs. Kamil. This one has been signaled a wide, and batsman run across, almost walk across for a single, and that takes score on to 22. 20. Yes, 2 runs came off that. The some instructions for Kamil. Some instructions for Kamil, and change in the field for the right-handed Arslan Malik. Here he comes, Kamil to Arslan. This one, a good delivery. It's been, was pitched on the middle stump, and Arslan just cut it to point, straight to the field, no runs. Arslan to Kamil to Arslan. This one also a good delivery there. Hit him on the pad, and the ball trickles towards the point, and they cross over for a leg bye. Yes. For a leg bye. And at 2 overs के इख्तिताम पे 21 रन हुए. 21 for no loss at the end of 2 overs. Karachi Gymkhana Whites chasing 200 runs to win, and the required run rate is 9.84. 9.94. Sorry, and now it is 9.94. 2 ओवर में 20 बनाए तो फिर 9.94. आपने गलत पहले बताया. Yes, and let us see 21. 9.94. Okay, no problem. And it's Islam Khan, and the third man is being posted on the boundary. We have 6 overs of field restrictions, and we have also this one being swatted to mid wicket. Let's see if the fielder, yes, the fielder gets to it. The batsman amble across for a single. The score goes on to 23. 23 for no loss, Karachi Gymkhana Whites. In this 9th match of the 35th Karachi Gymkhana RAMZAN Cricket Festival, being played for the Omar Associates Trophy, and it is Islam Khan. He has been driven, pulled to mid on, no run, straight to the fielder. It was hit hard. Now Islam Khan making its adjustments to his field. We have a few people, and now the mid on is being moved to long on, and the third man fielder has come into the circle. Here we go. Well, that was a lovely shot there by Taha. Arslan Malik. Great shot. He drove it to the cover boundary. 4 runs. And that takes the score on to 27 for no loss. Islam Khan. A delightful shot there by Taha. Here comes Islam Khan.
to Taha. My word, almost another coat of varnish and his leg stump would have been reeling. Good ball there by Islam Khan. No runs. Islam Khan. This one again straying down the leg side. 4 wides being signaled by umpire Rashid Khan. And can you let me know how many extras we have up till now? Islam Khan has been 14. out of 20, 32. out of 32 we have 14 extras. Yes. And they've been, Islam Khan especially has been straying very erratic line, and he's probably given most of those extras. Here he comes, and he's going to bowl left-handed to bowl to. This one was a good delivery, and Taha hit high on the thigh, and he's flexing his legs. Score continues. 32. 32 for no loss, and this is the 3rd over being bowled. Islam Khan. This time again. Wow. Let's wait for the umpire's signal. Bye. And it's 2 byes, and he was again straying down the leg side. And that is also the end of the over. 34-3. And at the end of 3 overs, it's 34 for no loss. 34. Factdate are 34 for no loss. The Karachi Gymkhana Cricket Committee and management have been responsible for this premier, pioneering cricket tournament during the month of Ramzan. When this tournament started about 37 years ago, there were only 2 tournaments being played in Ramzan. One was, if I remember correctly, the Nazmabad Cup, and this was the one. After this tournament came, slowly and steadily, Ramzan cricket started to grow, and Karachi Gymkhana was the nucleus for this growth of Ramzan cricket. And now, for the last 2 years, it has not been played. Here it comes. And this has been driven round the corner to and 1 run. And so 2 years because of the pandemic, this tournament was not played, and there was no cricket in Ramzan, and this year is the first time we are seeing this after 2 years. And this is a good omen, and I hope that from next year onwards, Ramzan cricket will come back to its original form. And here comes Kamil. This one outside the off stump. It's been driven well, but straight to the fielder. No runs, no damage done. Good shot there by Arslan Malik. And Kamil Mahmood continuing from the governor's house. And slight adjustments in the field, a packed offside field. This one straying down the leg side also.
he has his field on the offside, but he was straying down. Now it's the left-handed Taha field changing over for Taha, left-handed batsman, and Kamil to bowl to him as soon as the field settles in. Here comes Kamil. This one has been driven uppishly to long on, and the batsman scamper for the second run, 2 runs, and that takes the score on to 38, and this is the 4th over being bowled, 38 runs. 3.4. Here comes Kamil to Taha. He tried to sweep that ball down on one leg, one knee, and he failed to make contact collected by the keeper. This ball was pitched outside the off stump. No contact, no damage done. And Kamil to Taha. This one has been driven uppishly again, and the batsman cross over for a single, and at the end of 4 overs, the score is 39. Karachi Gymkhana Whites 39 for no loss. So they are about, what's the asking rate now? 10.06. Asking rate is creeping up very slowly. It's 10.06 now, and 4 overs being bowled, and we have 2 overs, the 5th and the 6th over, and these are the last 2 overs for fielding restrictions, and there's a bowling change. Instead of Islam Khan has been, the left-handed paceman Islam Khan has been changed, and the new batsman, new bowler is Lahiri. L-E-H-R. And Zulfikar Lahiri replacing Islam Khan from the Club Road end. The field is being set, and this is the 5th over being bowled. We have fielding restriction in place. Here comes Zulfikar, and this was pitched outside the off stump, and the batsman immediately started for the run as soon as his bat touched the ball, and they were able to easily take it. The ball went to mid-off, and now the right-handed Arslan Malik field being changed. I think this combination of right and left is also creating problems for the bowlers. Zulfikar will now bowl to Arslan Malik, the right-handed opener of Karachi Gymkhana. This is the 5th over being bowled. Zulfikar making fine adjustments to the field. And here he comes. A great shot there by Arslan Malik. He took 2 steps down the wicket, got to the pitch of the ball, and dispatched it to the long off boundary. 4 runs. Great shot. Taking no chances, taking excellent safe shot for 4. That takes the score on to 44 for no loss, and this is the 5th over being bowled. 44 for no loss. This one, great shot again. It was short outside the off stump. It's been dispatched to a wide, long off boundary. 4 runs. Both of these shots by Arslan Malik were a treat to watch, a pleasure to watch. He's
playing proper cricket. He gets to the pitch of the ball and then gives it the treatment it deserves. Bad bowling there by Zulfikar. Short, outside the off stump. He's been giving the batsman, a lot of space to play these shots. Here he comes now. Zulfikar. This one, better delivery, pitched on the middle stump and takes an edge and goes to short fine leg, and the batsman cross over for a single. That takes the score on to 49. 49 Karachi Gymkhana whites for no loss, and this is the 5th over being bowled in this 9th match of the 35th Karachi Gymkhana RAMZAN Cricket Festival being played for the Omar Associates Trophy. Zulfikar Lahiri to Taha, left-handed Taha. Here he comes. And Taha trying to make space for himself, but couldn't get him away, couldn't get Zulfikar away. It goes straight to the fielder at cover. No runs. Zulfikar from the clubber end to Taha. Bowled. This one is being bowled. Wow, that was huge. Taha wanted to keep the scoreboard moving. He was going down the track, and the ball, very good line and length, straight, hit the middle stumps, dislodged the bails, and that is the first wicket for Karachi Gymkhana whites, and now the score is 49 for the loss of 1 wicket in 5 overs. That 5 overs. 49. 49 for the loss of 1 wicket. And who's going there for Gymkhana now? 1 wicket. And we have now Bilal Munir, who plays for Karachi Gymkhana, who is a first-class cricketer, and he plays for the National Bank. He's a highly rated cricketer in Sindh, and let us see, we'll need all of Karachi Gymkhana whites will need all his talent to perform today to win the match for them. And Bilal Munir, so now the left-handed Taha is out, and now we have Bilal Munir replacing him. Kitne score kiye? Haan. He scored 12 runs of 13 deliveries with the help of 2 fours. And now this is the 6th over which will be bowled, the last over with fielding restrictions, and it's going to be Kamil Mahmood. Yes. Kamil Mahmood, unchanged, bowling to Arslan Malik, the right-handed. And it's been dispatched. It's pulled him to the backward square leg, 4 runs. Great shot by Arslan. Kamil was straying legs down the leg side, short, and Arslan made full use of it. Here he comes in. This time he's driven it to a long mid-off, and no run, straight to the fielder. Fast ball was traveling, so there was no chance for the batsman to take a single. Here comes Kamil to Arslan. This one straight to the fielder again. Good shot there, all along the ground, but no runs. This was a good line and length of that delivery.
almost a Yorker. Arslan. This one being pulled to long on single, yeah, for one round, single, and it's going to be Bilal Munir to face Kamil Mahmood. He's having a look around the field, and here comes Kamil. It's been driven behind the umpire at square leg, and Bilal opens his account with a single. Kamil to Arslan Malik. Here he comes. This one was pitched outside the leg stump, straying down the leg side again, and the batsman get two. This ball traveled to backward. 657. Square leg, and 6 overs have been completed, and they have Karachi Gymkhana Whites are 67 for the loss of 57 for the loss of 1 wicket. 57 for the loss of 1 wicket. And Bilal Munir and Arslan Malik are now there out in the center for Karachi Gymkhana Whites, while the fielding umpire Rashid Khan signaling that the fielding restriction 6 overs have been complete, and now they can have now 4 fielders have to be inside the circle, and the rest of them can be outside the field. The restriction of only 2 fielders outside the circle is finished, and let us see now what what the bowlers can do and what the batsmen can do. And it's going to be Zulfikar Lahri, and he will be bowling to Arslan Malik, right? Bilal Munir, right-handed Bilal Munir. He's having a look around the field, and while the bowling side captain makes slight adjustments, and here comes Zulfikar to Bilal Munir. This one misfield there at cover, so Bilal gets a single. Ball was traveling fast and straight to the field at cover, but he misfielded, and as a result, Karachi Gymkhana Whites get a single, and in comes Zulfikar Lahri to Arslan, and Arslan has driven it to the long on, and Arslan gets 1 run, and that takes the score on to 59. Karachi Gymkhana Whites in the 7th over, 59 for the loss of 1 wicket, at that of Taha. Here comes this time an almighty cut there by Bilal, failed to make contact. No runs, no damage done. Stifled appeal by Zulfikar. He's going to be bowling from the clubber end, and he's going to bowl to Bilal. And Bilal edges it to point for a comfortable single. That takes the score on to 60 for the loss of 1 wicket in the 7th over. इसके बाद मुझे आप बताएंगे asking rate. Asking rate इसके बाद इस ओवर के बाद this one again is outside the off stump, and Arslan guides it to a wide gully deep on the inner circle, 1 run, and it's going to be Zulfikar to Arslan Malik. Bilal, sorry.
This one again, same, but great, nice looking shot there by Bilal. He cut the ball, and the ball was traveling, but straight to the fielder, no runs. And that is the end of the 7th over. And at the end of 7 overs, Karachi Gymkhana Whites are 61 for 1. 61 for the loss of 1 wicket, that of Taha Zindani. And what is the asking rate now? Bowling change. 8.7. 8.7. No, no, Asking asking 10.69. 10.69. The asking rate is 10.69. There's a bowling change, and we see a lot of gentlemen walking on the track, and in spite of the heat, in spite of fasting. And with that, I will hand you over to our very own Mirza Qamar Beg, and he will come here with all his stylized Urdu commentary, and have a great one, and all the best. See you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Have a great match. Thank you. शुक्रिया जनाब मियाँ शौकत हुसैन साहब। और अभी हम लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे जनाब शौकत हुसैन साहब की कमेंट्री की। जिस वक्त मियाँ शौकत हुसैन साहब कमेंट्री करते हैं तो हम उमर कुरैशी के दौर में पहुंच जाते हैं, सिमिलर टू उमर कुरैशी। और यहाँ जॉगिंग ट्रैक पे हम देख रहे हैं जाते हुए जनाब जाम नफीस साहब को, जिनकी काविशें होती हैं खासा टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में। जाम नफीस बहुत आगे हैं, सेक्रेटरी जिमखाना है। और इस बीच पहली गेंद खेली है वहाँ बिलाल 1 रन के लिए। और यहाँ कराची जिमखाना 200 रन का हदफ का पीछा कर रहे हैं और अब तक 1 विकेट खो चुके हैं इस 200 रन के हदफ का पीछा करते हुए। और इस बार ये गेंद अच्छी गेंद टर्न करना चाहते थे बिलाल, ऑन साइड पे चूके गेंद से गेंद गई वहीं स्लिम डाउन की जानिब, जहां बॉलर ने फॉलो थ्रू में खुद ही फील्ड किया। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। स्कोर 62 रन, 1 विकेट खोकर कराची जिमखाना वाइट जो कि 200 रन का पीछा कर रहे हैं। इस बार टर्न किया है बिलाल ने ऑन साइड पे स्क्वायर लेग की जानिब। खेलते ही दौड़ पड़े बिलाल 1 रन के लिए। अरसलान मलिक खेल रहे हैं 30 रन पर, जो कि सलामी रूप में आए थे इनिंग का आगाज़ करने। अच्छी बारी ले रहे हैं अरसलान और एक उम्मीद और एक आस है अपने बल्लेबाजों के लिए। दाहिने हाथ के गेंदबाज राउंड द विकेट, और इस बार गेंद करेंगे अरसलान को। अरसलान ने जगह बनाते हुए खेला है डीप मिड विकेट की जानिब, बैक फुट पर। तब तक के फील्डर फील्ड करें, मौका है बल्लेबाजों के लिए। 1 रन का 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। फहद अंजुम दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंद करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज बिलाल मुनीर को इस दफ़ा खेलना चाहते थे। बिलाल मुनीर कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे। जो ही क्रीज से बाहर आते देखा बल्लेबाज को, गेंदबाजी में तब्दीली की और चौकाया है बल्लेबाज को। और इसी के साथ डॉट बॉल भी वहाँ फहद अंजुम की जानिब से। एक बॉल कम दिए, एक मिनट ये ओवर में देख सकता पूरा ओवर एक बॉल कम दिए, कम लग रही है। बॉल कम। एम्पायर ने ओवर के खात्मे का ऐलान किया है। यहाँ 1 बॉल कम है। गालिबन 1 बॉल, अभी 5 बॉल नहीं हुई थी। छोड़ो। वहाँ फार एंड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारियाँ कौन है? जुल्फ़िकार लहरी अब तक 2 ओवर कर चुके हैं, 14 रन दिए, 1 खिलाड़ी को भी आउट किया है, पवेलियन की राह दिखाई है।
जुल्फ़िकार लहरी की गेंद, लेग ब्रेक गेंद, ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को स्पिन होने दिया, खेला है उसे स्पिन के साथ ही डीप कवर की तरफ और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और अब बिलाल सामना करेंगे, बिलाल मुनीर। अरसलान पहुंचे 32 रन पर 27 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौकों की मदद से अरसलान अच्छी बारी ले रहे हैं। इस बार बिलाल मुनीर कट करना चाहते थे, गेंद से चूके, गेंद गई विकेट कीपर के पास और किस्मत वाले रहे कि गेंद ने बल्ले का कोई भी किनारा नहीं लिया, वरना विकेट कीपर इस बात के लिए तैयार थे। जुल्फ़िकार लहरी दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे और 4 ऑन साइड पे इस बार फिर से चूके हैं। बिलाल मुनीर खेलना चाहते थे, कट करना चाहते थे, गेंद की कहीं भी लाइन में नहीं थे। गेंद गई विकेट कीपर के पास, जहां विकेट कीपर ने गैदर किया। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। जुल्फ़िकार लहरी दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेल करेंगे बिलाल मुनीर को। इस बार खेलने में कामयाब हुए हैं बिलाल मुनीर डीप कवर की जानिब। तब तक के डीप कवर से फील्डर आके फील्ड करें, मौका है बल्लेबाजों के लिए। 1 रन का 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और मौजूदा रन औसत जो है 7.65 और जो रिक्वायर औसत है वह बढ़ता हुआ 11.82। लहरी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, फार एंड की ओर से 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। इस बार मिडिल सबसे पिक किया है बिलाल ने, खेला है उसे डीप लॉन्ग ऑन की जानिब। मौका है बल्लेबाजों के लिए, 1 रन का 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। जुल्फ़िकार लहरी फार एंड की ओर से गेंद करेंगे अब बिलाल मुनीर को। इस बार लेग ब्रेक गेंद थी, बैकफुट पर जाके खेला है स्पिन के साथ ही, पंच करते हुए कवर के जानिब। वहाँ फील्डर चौकन्ना, जो ही फील्डर को गेंद पे झपटते देखा, रन लेने की हिम्मत ना दिखा पाए बल्लेबाज, अपने कदम वापस क्रीज में खींच लिए। हमारे सामने से जॉगिंग ट्रैक पर जनाब जाम नफीस साहब और मोहम्मद हुसैन क्रिकेट कप्तान जो हैं यहाँ कराची जिमखाना के। और इसी के साथ 9वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 9वें ओवर के इख्तिताम पर 67 रन 67 1 विकेट खोकर कराची जिमखाना वाइट 200 रन का पीछा करते हुए यहाँ 20-20 के इस मैच में। मौजूदा रन औसत 7.44 और जबकि जो औसत दरकार है वो बढ़ता हुआ 12.09। 35वां कराची जिमखाना रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल उमर एसोसिएट 2022 का ये मैच खेला जा रहा है। ये मैच नंबर 9 है जो कि खेला जा रहा है कराची जिमखाना वाइट और फैक्टडेट इंजीनियरिंग के बीच। फैक्टडेट इंजीनियरिंग ने टॉस जीता था और पहले बारी ली थी और 200 रन का हदफ सजाया है कराची जिमखाना के लिए। और इस हदफ के ताक़ुब में 1 विकेट खो चुके हैं कराची जिमखाना के बल्लेबाज। अरसलान मलिक खेल रहे हैं 33 रन पर, सलामी रूप में गए थे, अच्छी बारी ले रहे हैं और एक उम्मीद है और एक आस है अपने बल्लेबाजों के लिए। जबकि उनका सामने है बिलाल मुनीर हैं। देखना पड़ेगा ये साझेदारी, ये पार्टनरशिप एक कहाँ तक सहारा देती है अपने बल्लेबाजों को। अरसलान मलिक 33 रन पर खेल रहे हैं। फहद अंजुम की गेंद राउंड द विकेट गेंद, उठता हुआ शॉट है, देखना पड़ेगा। गेंद एक टप्पा खाने के बाद फील्डर के हाथ में। इस दौरान मौका था 1 रन का आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों के लिए। और अब बिलाल मुनीर सामना करेंगे फहद अंजुम का। फहद अंजुम दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज, ऑफ राउंड द विकेट गेंद करेंगे। बिलाल मुनीर को इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, देखना पड़ेगा। गेंद तब तक कि डीप मिड ऑन से फील्डर आके उसे फील्ड करें। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का।
फाहद अंजुम फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे। अरसलान को इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेले हैं ऑन ड्राइव। तब तक के डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर फील्ड करें, मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। और इस 1 रन के साथ कराची जिमखाना वाइट 70 रन 1 विकेट खोकर। फाहद अंजुम राउंड विकेट गेन करेंगे और इस बार बैकफुट पर गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, खेल दिया है उसे डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ। जब तक कि फील्डर आकर उसे फील्ड करें, 1 रन पूरा किया और जो ही फील्डर को सुस्ताते देखा, दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी दौड़ विकेटों के दरमियान, अच्छे तालमेल की दौड़, 2 रन, दूसरा रन बहुत तेज़ी के साथ चुराया है ये दोनों बल्लेबाजों ने। फाहद अंजुम राउंड विकेट गेन करेंगे बिलाल मुनीर को और ये गेंद लेग स्टंप पे पड़ी, इस गेंद को जगह बनाते हुए खेले हैं ऑन साइड पे। वहाँ डीप मिड विकेट पे फील्डर की बहुत ही चौकन्ना फील्ड कहना पड़ेगा। 4 रन के करीब करीब थी ये गेंद, लेकिन झपटते हुए गेंद पर आए, गैदर किया और सिर्फ 1 रन पे महदूद रखा बल्लेबाजों को। फाहद अंजुम फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 4 ऑफ साइड पे, इसी फील्डिंग की सजावट के साथ। और इस बार बल्लेबाज चकमा देना चाहते थे लेकिन उस चकमे में ना आए फाहद अंजुम। ब्लॉक होल में की गई इस गेंद को ऑन साइड पे खेले हैं डीप स्क्वायर लेग की जानिब 1 रन के लिए। और उस 1 रन के साथ 10वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 10वें ओवर के इख्तिताम पर 74 रन 74, 1 विकेट खोकर कराची जिमखाना वाइट 200 रन का पीछा करते हुए यहाँ कराची जिमखाना के ग्रीन कारपेट पर 35वां कराची जिमखाना उमर एसोसिएट रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल 2022 का ये मैच खेला जा रहा है। कराची जिमखाना वाइट और फैक्टडेट इंजीनियरिंग के बीच। और वहाँ फार एंड की ओर से गेंदबाजी में तब्दीली हुई है, रिजवान कुरैशी आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभाल लें। रिजवान कुरैशी बाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज हैं, बाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंद करेंगे। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। रिजवान कुरैशी तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। सामना करेंगे अरसलान जो कि 36 रन पर बारी ले रहे हैं। पहली गेंद को ऑन साइड पे खेलते ही 1 रन लिया है रिजवान। और इस बार पुल किया है मिडिल स्टंप पे पड़ी इस गेंद को खूबसूरती के साथ बिलाल मुनीर ने। जो ही गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ गिरते देखा, अपने आप को एडजस्ट किया ऑन साइड पे पुल करते हुए डीप मिड ऑन बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ बिलाल पहुंचे 13 रन पर 17 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौके की मदद से, जबकि अरसलान खेल रहे हैं 37 रन पर। बिलाल सामना करेंगे रिजवान कुरैशी का, बाइने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज। इस बार बैकफुट पर गए हैं, जगह बनाई है। ये गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी। गेंद के उछाल के साथ ही खेले हैं बिलाल कवर की जानिब, जहां फील्डर को चूकते देखा और 1 रन हासिल किया बिलाल ने। रिजवान कुरैशी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 5 ऑफ साइड पे। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है रिजवान कुरैशी, गेंद को दिखा दिया है उसे डीप मिड ऑन का रास्ता, तब तक के फील्डर आके फील्ड करते हैं। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और उस 1 रन के साथ 80 रन।
37 रन पर पहुंचे। अरसलान 14 रन पे खेल रहे हैं। बिलाल सामना करेंगे बाएं हाथ के गेंदबाज का। इस बार बैकफुट पर जाते हुए जगह बनाते हुए मिडिल स्टंप से लिया गेंद को, खेला डीप मिड ऑन की जानिब, तब तक कि फील्डर फील्ड करके थ्रो करे। आसानी के साथ 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और उस 1 रन के साथ बिलाल मुनीर पहुंचे 15 रन पर 19 गेंदों का सामना करते हुए। अरसलान खेल रहे हैं 38 रन पर 33 गेंदों का सामना करते हुए। 5 चौकों की मदद से 115 का स्ट्राइक रेट है अरसलान का, और इस बार खेलना चाहते थे, गेंद से पूरी तरीके से चूके, और एक और डॉट बॉल वहाँ रिजवान कुरैशी की जानिब से। उल्टे मैं साउथ का बता रहा हूँ आपको। 11वें ओवर के अख्तिताम पर 82 रन 82। बता रहा हूँ आपको। और ये जो मैंने साउथ की वॉइस नोट छोड़ी आपको, ये आप समझ गए जो मैं कल को देख के आया था। मैंने वाला ग्रीन वाला वो अब्दुल्ला का बनेगा, नाम आप देख लिया। मौजूदा रन औसत 7.45, और जो दरकार औसत है वो बढ़ता हुआ 13.11। और यहाँ फाद अंजुम अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे, जो कि अब तक 2 ओवर में 10 रन दिए हैं फाद अंजुम ने। फाद अंजुम दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज अपनी फील्डिंग की सजावट सजाते हुए। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पे इसी राउंड द विकेट गेन करेंगे। बिलाल मुनीर को, और इस बार बैकफुट पर गए बिलाल मुनीर। गेंद को स्पिन होने का इंतज़ार किया, खेल दिया उसे डीप मिड ऑफ बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट यहाँ बिलाल मुनीर का। यूं ही गेंद को ऑफ स्टंप पे पड़ते देखा, बैकफुट पर गए, जगह बनाई, खेला उसे बल्ले के बीचों बीच लेते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों के साथ 86 रन बिलाल मुनीर पहुंचे 19 रन पर। फाहद अंजुम सामना करेंगे बिलाल मुनीर, और इस बार मिडिल स्टंप पे पड़ी शॉर्ट गेंद को खेला है डीप मिड विकेट की जानिब, तब तक कि डीप मिड ऑन से फील्डर आके फील्ड करें। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, और उस 1 रन के साथ बिलाल मुनीर पहुंचे 20 रन पर 21 गेंदों का सामना करते हुए। अरसलान सामना करेंगे फाहद अंजुम का। ये गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाके आसानी के साथ जगह बनाते हुए फिर से खेले हैं डीप मिड ऑन की तरफ 1 रन के लिए। अरसलान पहुंचे 39 रन पर, और इस बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे बिलाल मुनीर, चूके थे, किस्मत वाले रहे इस बार। विकेट के ऊपर पीछे से आए, जब तक कि शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर आते फील्ड करने। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। फाहद अंजुम दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। अरसलान को बैकफुट पर गए, अरसलान आसानी के साथ जगह बनाई, खेले हैं डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, तब तक कि फील्डर फील्ड करें। मौका है बल्लेबाजों को 1 रन का, और यहाँ 1 या 2 रन से अभी काम नहीं चलने वाला, 1 आध बाउंड्री ज़रूर लगानी होगी। जो रन औसत दरकार है वो 13.47। इस बीच फिर से किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे हैं खासी फाहद अंजुम फाहद अंजुम ने 3 ओवर किए हैं, 19 रन दिए हैं, खासी किफ़ायती गेंदबाजी की है। इकनॉमी उनकी है 6.33।
12वें ओवर के अख्ताम पर 91 रन 91 कंप्लीशन ऑफ 12 ओवर चेसिंग द टारगेट 200 कराची जिमखाना वाइट। और यहाँ ओवर में 1-2 बाउंड्रियाँ ज़रूर लगानी होंगी कराची जिमखाना वाइट्स के बल्लेबाजों को, क्योंकि जो रिक्वायर औसत है वो 13.63 का है। कहाँ पर हो? तारीख आएंगे कम से कम 2 बाउंड्रीज तो ज़रूर चाहिए होंगी हर ओवर में, अगर मैच में आना है कराची जिमखाना के बल्लेबाजों को। चलो ठीक है, पूछते हैं। और वहाँ फार एंड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारियां फिर से रिजवान कुरैशी के हाथ में। रिजवान कुरैशी दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। इस बार एक खिलाड़ी को ऑफ साइड पे ले आए हैं, अब 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। रिजवान कुरैशी की इस गेंद को कदमों का इस्तेमाल करते हुए आए बिलाल डाउन द विकेट खेल रहा है वहाँ ऑन साइड पे डीप मिड डाउन की तरफ, तब तक के फील्डर फील्ड करें। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। और इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पे, चूँकि गेंद ने बल्ले का दीपरी किनारा लिया और गई गली पॉइंट की जानिब, जहां रन मौजूद था बल्लेबाजों के लिए। और 1 रन के साथ 93 रन 93। रिजवान कुरैशी गेंद करेंगे बिलाल मुनीर को, दाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंद, बाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज हैं ये। उनकी इस गेंद को पुश करते ही रन के लिए दौड़ पड़े हैं बल्लेबाज। ऑफ साइड पे 1 रन के लिए बिलाल मुनीर खेल रहे हैं। 23 रन पर 24 रन बनाए हैं बिलाल मुनीर ने 25 गेंदों का सामना करते हुए। अरसलान खेल रहे हैं, 41 रन की बारी ले रहे हैं। सलामी रूप में आए थे, अब तक क्रीज पर मौजूद हैं और एक उम्मीद और एक आस है बल्लेबाजों के लिए। और इस बार मिडिल स्टंप से पिक किया गया, अगले कदम पे आए, खेल दिया उसे डीप मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर से, एम्पायर का इशारा, 6 रन। यूं ही गेंद को थोड़ा सा फ्लाइट गिरते देखा, अगले कदम पे आए, बल्ले के बीचों बीच लिया अरसलान ने, और बल्ले के बीच में जो कूदा होता है, जो स्ट्रोक होता है, वो दिखाया डीप मिड ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट। और अब 47 रन पर पहुंच गए हैं अरसलान, और अब सिर्फ 3 रन की दूरी पर अपनी शानदार निस सेंचुरी से अरसलान। और इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया है, फिर से उठता हुआ शॉट, इस बार देखना पड़ेगा, फिर से इस बार, और ये आउट। दूसरा छक्का लगाना चाहते थे, थोड़ा सा कहना पड़ेगा, बल्ले में वो वाला पिछला वाला कूदा नहीं दिखा पाए जिससे उन्होंने 6 रन हासिल किए थे। इस बार गेंद फजा में रही, जहां डीप मिड ऑन के फील्डर ने कोई गलती नहीं की, और इसी के साथ बड़ा झटका और ये बड़ा सदमा है कराची जिमखाना वाइट के बल्लेबाजों के लिए, जबकि अरसलान आउट होकर पवेलियन में आ रहे हैं। अरसलान ने 47 रन बनाए। अरसलान 47 रन 39 गेंदों पे 5 चौके और 1 छक्के के साथ अच्छी बारी लेके आ रहे हैं, लेकिन कहना पड़ेगा अपने बल्लेबाजों को बीच मझधार में छोड़ के आ रहे हैं। जब ज़रूरत थी अरसलान की बल्लेबाजी की, इस मौके पे बड़ा झटका है, बड़ा सदमा है ये कराची जिमखाना वाइट के लिए। नए जाने वाले बल्लेबाज फरहान आरिफ
वहाँ तारीफ़ करनी पड़ेगी रिजवान कुरैशी की गेंदबाजी की, जिस तरीके से ललचाया था बल्लेबाज को, एक छक्का लगाया, उसके बाद दूसरे छक्के की कोशिश में आउट हुए अरसलान। और इसी के साथ मैं आगे का आंखों देखा हाल अपने साथी कमेंटेटर जनाब उमर ख़ान के हवाले माइक देता हूं, जो कि आगे का हाल अंग्रेज़ी में। ओवर टू उमर ख़ान। Thank you, Mr. Mirza Qamar Beg. What started off as an interesting run chase, suddenly Karachi Gymkhana has lost their way. Last ball of the 13th over, strike rotated. So 101 for the loss of 2 wickets. Karachi Gymkhana after 13 overs chasing 200. They require 99 runs of 42 deliveries. The required rate is over 14 now. They got off to a decent start. They were 57 at the end of power play. And they've scored only 34 runs in the last 7 overs. That's under 5 runs an over. So initially the run rate, the required rate that was exactly 10 has jumped over 14. They still have 8 wickets in hand. Bilal Munir is on strike. So Karachi Gymkhana requires 2 boundaries at least every over to stay in this game. The change in bowling. Akhtar will start the over number 14. This time ball onto the middle stump. Quick single taken towards the short mid-wicket region. Now Bilal Munir will be on strike. He must be eyeing the boundaries from here. One good over can change the momentum of the game. 1 run to start the over. Second delivery of the 14th over. This time fuller delivery and he striked it well, but straight to the longer fielder. For a moment it seemed like that he's connected it good and well enough, but third wicket loss for Karachi Gymkhana. And the required rate is now touching 15 runs an over. We still have over 6 overs to be played. Abid Sheikh bowler. Samir is the new batsman. So Gymkhana will be eyeing boundary every ball now. This time Fuller outside off stump. Headed straight to the cover fielder for 1.
This time outside off stump, Farhan guided it to the short third man fielder. 1 run added to the total. 104 for 3, Karachi Gymkhana. Sameer on strike. This time full delivery, hit it towards the long on region. They're coming. No, they settled down for 1 only. So 105 for 3. Gymkhana still requires 95 runs of 6 overs. Last ball of the over. Another single added. So 106 after 14 overs. They're going at 7.5 runs an over. So 94 runs of the last 6 overs. The required rate has jumped over 15. 15.67 to be precise. This time ball was bowled outside off stump, nudged towards the deep cover region. Another single. Singles won't harm Factdate as the required rate is 16. That makes it 4 boundaries per over. And still 6 overs are remaining. If this was only 1 over, it was still manageable. But going for 16 runs an over for 6 overs is a tough task. The useless fielder is hit it straight up in the air. Chance for the fielder, but won't be able to reach the ball. So 2 runs added to the total. 3 runs of the first 3 deliveries. Still boundaries required for Karachi Gymkhana. Rizwan Qureshi bowling his 3rd over. This time flighted delivery, he hit it from outside off stump towards the mid-wicket region. Another single added to the totals. Only 4 runs of the first 3 deliveries. And the required rate is touching 17 runs now. This time ball was outside off stump. He hit it straight to the point fielder. Some mix up between the runners, but dot ball. Another single added. With every ball, the game is going out of the reach of Karachi Gymkhana batsmen. 111. Nelson on the board, 3 wickets down. Still have 31 balls remaining in the game. This time he hit it towards the mid-wicket region and straight to the fielder. Another wicket down. 4 wickets down now for Karachi Gymkhana. 111 for 4. Sameer is the batsman, dismissed for only 5 runs. The intent was right, they needed 6s. And now Shah Shajani will walk in at number 6. With the match completely out of hand, as the required rate is over 18 now. 4 wicket over नहीं हुआ 15 ओवर रहने तो 4 विकेट हैं
15 ओवर 101 111. 111 सॉरी 111 5 overs remaining. 69. 89. They wish it was 69, but 89 runs required of 30 deliveries. The required rate is almost 18 runs an over. Shah Shajani is the new batsman. This time fuller delivery on middle stump, no run added. So another dot ball, mounting the run rate, mounting the required rate. Second ball this time onto the middle stump, he hit it towards the mid-wicket region, but no damage done as only 1 run is added. They require 3 runs per ball from here, and singles will just mount up the required rate. So only 1 run of the first 2 deliveries. They need 16 more runs of the next 4 to keep up with the run rate. Shah Shajani will face his first delivery. 112 for 4 Karachi Gymkhana. We're into the 16th over. This time outside off stump, hit it straight to the point fielder. The batsman has to rush, made it safely in the end. So 1 more run added to the total. 113 for 4 Karachi Gymkhana. We're into the 16th over. This time fuller delivery, use his feet, and finally boundary for Karachi Gymkhana. Over long on for 6. Good hit by Farhan Arif. But is it a bit too late? "81 runs of 26 deliveries. This time outside off stump, he's hit it over covers. Back-to-back boundaries for Gymkhana. 4 more runs. And this intent was required a few overs earlier. This would have been a different ball game, but still they're in it. 77 of 25. "77 runs to get 25 deliveries. This time ball on the middle stump, quicker delivery, hit straight to the deep long on region. 2 runs added to the total, so 12 runs of the last 3 deliveries. 75 runs to get of 24 deliveries. 4 overs and 75 runs, that makes it 19 runs an over. "125 for 4 Karachi Gymkhana whites.
This time we're waiting for the signal. Shah Shajani hit the ball over mid wicket. There was an opportunity. Catch was dropped and he guided the ball over the boundaries. 6 welcome runs for Karachi Gymkhana. They need a few more of those. But a good start to the over. They require 19 runs an over. They start off with a 6. If Shahs is able to get 2 more 6s in this over, they're still in the game. And if they somehow are able to take the game to the last over, still many possibilities. This time fuller delivery onto the pads, big appeal. But umpire is unmoved, so 1 run added to the total. So 7 runs of the first 2 deliveries. Umpire signaled it as leg byes. This time, next ball will be flighted delivery, but hit straight to the long on fielder. Another single added to the total. So 8 runs of the first 3 deliveries, 3 balls remaining. And now Shahs will look to hit the ball over the boundary. Let's see what the bowler does here. Next delivery. Flighted delivery, and he's blocked it. Dot ball, 4th ball of the over. 5th ball, a flighted delivery. He wanted to heave it over mid wicket, but unable to connect. 1 run added towards the long leg region. So 9 runs of the over. Karachi Gymkhana 134 for 4. Last ball remaining of the 17th over. This time flighted delivery and Farhan hit it straight to the cover fielder. 1 run added, so 10 runs of the over. 135 for 4 Karachi Gymkhana after 17 overs. 135 मैं लिखता हूँ. जी क्या जहूर अहमद जहूर अहमद कौन है ये सेक्रेटरी स्पेश और कौन कौन आएगा साथ ये होंगे अपना मसरूर मिर्जा था ठीक है पूरा सब तो हमने बताया स्कोर बता देना बता तो दिए वापस बता दो खड़ा हो जाओ 135 135 for 4 Gymkhana, 18 balls remaining, 65 runs to get, so the required rate is over 21 now, which seems to be a bit impossible, but if you get 50 more of those, things can become possible. This time outside off stump, he hit it straight over the head of the bowler. 1 bounce boundary. So 5 runs of the first delivery as the over started off with a wide. If they need 5 more of those because the required rate is 21. If you hit 5 boundaries in an over, that makes it 20. He started well with the boundary. Can he carry on with the flow? That is the big question.
This time, Fuller ball onto the pads, hit it towards the mid-wicket region. They're coming back for the second run. So 2 runs added to the total. Gymkhana 142 for 4. This partnership is now 31 of 14. This kind of intent was required earlier. Gymkhana lost their momentum between the 6 to 15 overs part of the game. They were 57 in the power play, and they managed to get 34 runs in 7 overs from the power play. This time Fuller delivery, and he's gone. Quick hands by the wicketkeeper. Farhan Arif's gone stumped. He played well for his 27. Under normal circumstances, that is good batting. But the middle overs did the damage for Karachi Gymkhana, as they managed to score only 34 runs between the 7th and 13th over of the innings. That jumped the required rate to over 15, and since then it's been difficult for the Karachi Gymkhana team. क्या पूरा शॉट मैंने हो गया कि तुम यहाँ से निकले थे ना तो तुम्हारी जो फटी हुई थी ना ओवर एग्जॉस्टेड हाँ हाँ मैं पूरा थका हुआ था हालत तुम्हारी वैसी हाँ मैं थका हुआ था मैं बहुत थका हुआ था यार ये कमरा है ना मैं शादी चला गया हाँ चले So 15 balls remaining in the game. Karachi Gymkhana 5 down now. Farid Kasi is the new batsman, and 142 for 5 Karachi Gymkhana. With 58 runs to get of 15 deliveries. If this was a video game, it was still possible, but not in real life. The ball was bowled outside off stump, beaten, and another dot ball. So good comeback by the bowler after conceding 7 runs of the first 2 deliveries. He's picked up a wicket and bowled a dot ball. So last 2 deliveries of the 18th over. Fuller ball onto the middle stump, guided towards the deep mid-wicket region. 2 runs added to the total. 144 Karachi Gymkhana for the loss of 5 wickets. Last ball of the 18th over. This time Fuller delivery, hit it straight to the long on fielder. Only 1 run added, so 145 for the loss of 5 wickets. Karachi Gymkhana last 2 overs, and they require 55 runs of 12 deliveries. स्कोर बता दें 145 So if we look at the bowling of Factdate, Kamil Mahmood bowled well, gave only 32 runs in his 4 overs. Zulfikar Leri was amongst the pick of the bowlers, conceded 17 runs and picked up a wicket in his 3 overs. Fahad Anjum was economical, conceded 19 runs in his 3 overs. So dot ball to start with. If you're chasing at over 10 runs and over, if 2 or 3 bowlers can bowl at an economy of near 6, the match is far gone. And the spinners played a crucial role for Factdate. They were very economical, did not let the Karachi Gymkhana batsmen to score boundaries consistently. So 11 deliveries, 55 runs to get. Gymkhana will just try to better their run rate by scoring maximum runs of these 11 remaining balls. This time on to the leg stump, hit straight back to the bowler.
1 run added to the total. So 146 Karachi Gymkhana, 10 balls remaining. The match is far gone for Gymkhana boys. पीछे 30 रन दिए 20 extra. 20-25 तो दिए हैं 20 extras. Yeah. 10 ओवर 57 6 में थे. हमने 6 से 13 में से यार इन लोग बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं यार fielding. This time fuller delivery and I think he's broken his bat. Shah Shajani has broken his bat. We'll need a new one. मतलब काम आने वाला मेरे पास यार किसने लगाया इसे यार ये अल्लाह ने उसको बहुत सवाब मिलेगा चल ही नहीं रहा है. ये भाई ये बात है तो बंद करना पड़ जाता अब मैं तो बंद कर देता हूँ सर आधे घंटे के लिए यार रास्ते में आप कुछ बताएंगे अपडेट क्या व्हाट्स द अपडेट ऑन लाइफ ब्रो व्हाट डूइंग ऑन बिजी रमजान कर रहा हूं सिर्फ एक बॉल है सिर्फ बैट बॉल उमर को सबने जवाब दिया यार फोन ही नहीं लगा किसी का. किसका दोनों का सोच सकते हैं अल्लाह को बोला मैंने बात कर ली है सबसे मैंने तुम्हारी बात कर ली बाद आलम ने कहा बस वो क्योंकि उनके रात में मैचेस होते हैं दिन में भी जाते हैं. हाँ तो बस उनसे वो कर लो ना मैसेज छोड़ दो. नहीं इंटरव्यू वो कर लो लाइन अप कर दो. नहीं ऑनलाइन कर लो ऑन कॉल. हाँ मतलब वीडियो कॉल राइट दैट्स हाउ वीडियो कॉल नहीं मैं तो फिर बुला के करो मजा उसमें है. मजा उसमें ही है और उनका भी बड़ा तुम कि आए हो मेरे शो पर मजा आता है यार. लोग नहीं बस भाई मैंने सबको बोला हुआ है लोग ये देखो मैंने पूरा तुम्हारा मैसेज आगे आपके नहीं बिल्कुल बिल्कुल आई डोंट डाउट यू एट ऑल. आजम को भी मैंने बोल दिया आजम तो मिल गया था. हाँ तो आजम को भी बोल आजम मिल गया. आजम पकड़ में आ जाए आजम भी आया टेबल खेलने हाँ मैं इसके साथ था आजम दोनों मेरे साथ थे जब जा रहे भाई आजम इधर आया था. आजम तो पुरानी उससे है लेकिन यही कि जाहिर है पाकिस्तान का लव लग गया तो फर्क तो आता है. नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है सब फारिग घूम रहे हैं सब सारे घूम रहे हैं सब तक इतने फारिग हैं सबके तुम्हारी सोच है सब बहुत फारिग हैं सब The next ball this time and he's cleaned him up. So he broke his bat on the previous delivery, lost his wicket on the next one. He's not having a good day at all. इतना पानी नहीं देखा कितने फारिग प्लेयर है So Gymkhana lost his 6th wicket and now Rahman is the new batter. एक बात बताऊं खाना के बाथरूम में जब नहाता है ना बंदा तो सही से साफ हो जाता है हेलो काम तो अम्मा वो मैं ये कह रहा हूँ मैं घर सारी घर पे करूँगा तो मैंने बताया था हाँ वो क्योंकि मैं सुबह से नहीं है तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं हाँ ठीक है खाना वो पानी शरीर का जो है वो बनाने के लिए जाता है 146 for 6. 8 balls remaining in the over. Impressive performance by Factdate. रन तो हुए नहीं कितने रन किए मैंने 8 10 सारे तो यार फिर भी एंटरटेनमेंट हो गया हाँ सब होंगे अगर लेकिन वो आजम को लोकेशन उन लोगों ने भेजी थी गुलशन में नहीं है मुझे कोई ले गया है आजम के साथ आ जाता लियाकताबाद Next delivery this time. Hit towards the point fielder. 1 run added to the total. 147. मैंने जानबूझ के छोड़ दिया 7वें से 13वें ओवर तक हमने सिर्फ 34 रन किए. हाँ मुझे पता है वही इंडियन में गए. मैंने अरसलान से कहा यार रुक जाओ थोड़ा 20 मैंने उससे कहा मैं मारूंगा तुम रुक रहा मैं मारूंगा लेकिन वो उससे पहले आउट ही हो गया तो मैंने कहा चलो नहीं चलाऊंगा तो
वो कोई सीन ही नहीं था, हर ओवर में 2 रन 2 चौके, नहीं लगते तो फायदा नहीं था मैच के लिए। One more run added to the total, and that's a very aggressive throw by the bowler. रन आउट तो क्या हुआ, ड्रामा हुआ, आउट था, शोर में जा रहे 48 148 for 6 माइक बंद है, after 19 overs. गाना तो कोई नहीं बैठा था, गाना तो कोई है, स्पीच हुई, Last 6 balls of the match. बंद कर तू नहीं, माइक बंद कर तू। So last over of the match. First ball bowled on the middle stump. Hit straight to the short mid wicket fielder. Chance of an overthrow, but no run added. Fahad Anjum bowling the last over of the match. He's been very economical so far, just conceded 20 runs. This time hit it straight up in the air. Chance for the short fine leg fielder, and he makes no mistake. So another wicket down for Karachi Gymkhana. First wicket for Fahad Anjum. जो बता दें कितने बजे तुम लोग जाते हो? 12:30 से लेके 3 बजे तक मैं बैठा रहता हूँ। सही है, मैं अगर सोया नहीं उठा हूँ तो मैं आ जाऊँगा, पारी भी होता हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। Mavia is the new batsman. Gymkhana 149 for 7. अगर इनमें से किसी ने कैच लिया है 50 मालूम से या बॉल किया है किसी ने, फहद अंजुम होना चाहिए, विकेट भी ले ली ना। अच्छा, फहद अंजुम नहीं आना था, विकेट उसने ले ली। वैसे वजन पर सबसे तेज खेला था इनमें। Next ball this time. 4 runs added to the total. बॉल पे 50 किया, 34-50 50। Next ball, fourth ball of the last over. This time he connected it well as well, and is it taken? 6 runs. Where was he 10 overs ago? But he's enjoying himself out there in the last over. Farid Khan getting someone middle of the bat. But this was required 10 overs ago. It's a bit too late now. The last 2 balls remaining, 159 for 7 Karachi Gymkhana. This time fuller delivery. He hit it towards the long off region for 1. So last ball of the match, 160 Karachi Gymkhana for the loss of 7 wickets. Mavi on strike. He used his feet and he's launched it up in the air, and it's taken. So 8 wickets down for Gymkhana. They manage 160. They've won by 39 runs. So congratulations to Factdate. We'll join you with a match presentation shortly. 54 और 2 विकेट। जी 160
स्कोर 8 हुआ है ना? यस मैन ऑफ द मैच टीम के कप्तान फहाद अंजुम, कप्तान भी यही है कैप्टन ने किए हैं 54 ऑफ 41 और 2 विकेट। आज आएंगे 5 मिनट बैठ सकते हैं ना? हाँ वो कमरा मेरा है ये अच्छा बहुत हो गया। इधर बंदा ही है बिलाल अब्बा के क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अबू ठीक है। काफी टाइम हुआ उनसे मेरी मुलाकात बात नहीं कम हुई। आते हैं। मैं तो कह रहा था वो आज आ जाए यार, गाड़ी का एक छोटा सा मसला था। क्या हुआ? मैं छोड़ देता हूँ, कहाँ जाना तुम्हें? नहीं नहीं उनको था, अच्छा मैं उनको मैंने उनसे बोला था आने को, बट मैं उनसे बोलूँगा यार। मेरा बहुत सलाम देना, उन्होंने काफ़ी टाइम हुआ मेरी बात मुलाकात नहीं हुई, उनको बोलता हूँ। वरना उनसे तो मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहता था। हाँ हाँ हर वक्त उनको पुश करता रहता था किसी ना किसी चीज़ के लिए। हाँ मुझे बताते थे। चलो बाकी फिर मैं वापस कॉल करता हूँ। हाँ करो, मैं तुम्हें एक दो और लड़कों का नंबर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं सबका मैं मैं तुम्हारे तुम्हें उन लोगों का नंबर दे रहा हूँ जो तुम्हें तंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हाँ करेंगे। अच्छा मजे की चीज़ है कि दोनों पहले मेरे शोज पे आ चुके हैं, बस फिट है तो ना। वो फादी भाई बकवास कर रहे हैं, लंबी कर रहे हैं, ठीक है हाँ। कि मुझे इजाजत लेनी है, ये करना नहीं, वो करना, वो तो- कुछ भी नहीं करना, छोटा सा इंटरव्यू है, कुछ भी नहीं होगा। एक दफ़ा इन्फॉर्म करना होता है। मैंने बोल दिया उनको, मैंने उनको वैसे जबकि वो मेरे रेडियो शो पे 3-4 बार आ चुके हैं, फवाद आलम 3-4 बार आ चुके हैं मेरे उस पे, डन है। लेकिन तब वही मूड की बात होती है। एग्जैक्टली। यार बेचारे शो करते हैं ना, पर रेडियो का मुझे बता रहा था, मैंने कहा भाई मैं सबके नंबर दे दूँ। हाँ 103 पे चला। नहीं होना भी हाँ साथ ही निकलते हैं। I will request both team members of Karachi Gymkhana and Factdate, please come forward for the match presentation. एकदम पढ़ेंगे नमाज पढ़ने के बाद उधर जाएंगे। Team members of Factdate and Karachi Gymkhana, please come forward for the match presentation. चलो वो खा लेते बाद में
Hello and welcome to the 35th Karachi Gymkhana Umar Associate Ramzan Cricket Festival. So match number 9 was played between Factdate and Karachi Gymkhana White. In the end, Factdate won the game by 39 runs. Brilliant performance. Congratulations to Factdate. Start off with introducing our presentation party for today. Our chief guest for today is Mr. Zanur Ahmed, Secretary Sports Karachi Gymkhana. We have with us Mr. Masoor Mirza, member MCCA and member subcommittee Karachi Gymkhana. And we have with us Mr. Mohammad Hussain, captain of Karachi Gymkhana. And we have with us Mr. Mohsin Anand, member of Karachi Gymkhana. So we had some few impressive performances. We had 3 half centurions from Factdate, Ahmed Hussain, Fahad Anjum, Razan Farhan, but in the end, Fahad Anjum for his 54 of 41 and 2 wickets. Very well played. And we've been joined by State Secretary Karachi Gymkhana Cricket, Mr. Jam Nasib as well. So cash award of rupees 2,000 by Perception, cash award of rupees 2,000 by Toyota Central Motors, gift hampers from Dayfresh, a free voucher of rupees 500 by Engg Restaurant and gift hampers by Candyland. बात भी रहेगा आपसे बात भी करेंगे पहले भी वेरी वेल प्लेड कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 50 और एंड में 2 आउट क्या चल रहा था मैच बड़ा जबरदस्त जीता है बहुत शुक्रिया विकेट तो अच्छी थी और बैटिंग के लिए शांत थी तो वो ऑब्वियसली वो कोशिश किए कि हमारे अपने भी रन किए वनडाउन में भी रन किए उसके बाद बैटिंग थोड़ी चलती हो जाती है ना विकेट थोड़ी टर्न हो जाती है तो वो रन करना और 200 रन इनको सेव करने के लिए ऑब्वियसली मेरा ख्याल अगर तो ओपनर और चलते रन ज़्यादा बना दे तो वो मैच अच्छा हो जाता है। अब 1 जीते 1 हारे हैं आगे 2 बड़े टफ मैच आ रहे हैं क्या आगे के प्लान है कुछ नहीं डे बाई डे खेलते हैं नेक्स्ट मैच के लिए तैयारी है मंडे को साला मैच है वो भी जीतने की कोशिश करेंगे वेल प्लेड एंड ऑल द बेस्ट In the end, I request Mr. Masoor Mirza to award a souvenir to our chief guest, and he's also his son, so that's a coincidence. And that's all for today. We'll join you tomorrow for match number 10, played between Karachi Gymkhana Blues and Omar Enterprises. Till then, take care of yourself.